Good morning. Welcome to IANS TV. I'm Parul Malhotra, and I'm very pleased to have you join us for our special Budget Day coverage. Yes, it's Budget Day. In an hour from now, Nirmala Sitharaman will present her 4th budget. This will be the Modi government's 10th budget for India. And at the moment, the ministers are streaming into Parliament. There will be a cabinet meeting before the budget is laid in the House. It is an important day for 1.3 billion Indians. At one level, all we are expecting from the government is their spending decisions and where the money is going to come from. The government is going to say, this is what we are going to spend on X heads, and this is where we expect to earn money from, so that we can spend. At another level, it's far more important than just that, because those choices that the government makes will impact you, will impact me. Those choices will determine our choices. They will determine the quality of our life this year. They will determine the opportunities that we have for ourselves and our families now, 2 years from now, 5 years from now. A lot will depend on what the finance minister says, but more importantly, a lot will depend on how the government actually executes many of those decisions that will be explained to us. So all of that will be coming up. We will make sense of it all for you. But really, it all started from yesterday when the economic survey came out. And one of the headline numbers that everybody latched onto was the expectation on the part of the government that India will grow between 8 and 8.5% starting this fiscal, April to March 22-23. That means there is a pickup in growth. There is a certain amount of momentum in economic growth. The question then is, what will the government be doing in this year to make sure that that projection actually happens, that it becomes a reality? So let's take a look at the economic survey. Let's set the scene for what comes today. Take a look. देश की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से रिकवरी हुई है और इकोनॉमी के सभी सेक्टर महामारी से पहले की स्थिति में आ चुके। इतना ही नहीं, भविष्य में आर्थिक विकास की स्थिति में और सुधार आने की उम्मीद है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का इकोनॉमी पर उतना बुरा असर नहीं पड़ा जितनी पहली लहर का पड़ा था। ये बातें सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल और हाल में नियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कही। वहीं इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को इकोनॉमिक सर्वे 2022 को संसद के पटल पर रखा। आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश की जाती है और साल भर का पूरा लेखा जोखा रहता है। ये बजट का मुख्य आधार होता है। इसमें अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर में गिरावट का अंदेशा जताया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 9.2% की ग्रोथ और अगले वित्तीय वर्ष में 8 से 8.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। Now, one of the clear points we make right up front in the survey is that there's been a revival of economic activity to pre-pandemic levels in the year 21-22. This shows through in the national accounts, and it shows through a whole bunch of high-frequency data that we have. I've just, for illustration, put the e-way bill collection, and you can see that there was a big contraction during the national lockdown last year, then a sharp revival, a more shallow slowdown during the second wave. So even though there was the health cost of the second wave was much more severe, the economic cost of it, by almost all accounts, was much milder. But there was an impact, and then a subsequent revival. So where does that leave us? Well, as you know from the advanced estimates, the economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. And you can see on the slide on the right that it is now a little bit above where it was in terms of economic activity, where it was before the pandemic. So in other words, we have now grown past the pre-pandemic level. वहीं देश में स्टार्टअप का कल्चर कोरोना काल में काफी बढ़ा है और ये काफी खुशी की भी बात है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी
भारी उछाल मिलेगा। When people hear about this, they tend to have in their minds that what we are really talking about is all the big corporates or the unicorns that everybody likes talking about these days in the media. But the fact is, what you are witnessing here is a change in risk appetite and animal spirits in the economy, which is very much widespread across the country and at every level, and particularly showing through in this field of startups. So here I have two maps. The one on the left is just from 5 years ago. It shows new startups in India as of the year 2016-17. These are not just any company that happened to have been established. These are companies registered with DPIIT as startups using certain criteria. So they are proper startups. And you can see in the year 16-17, there were these few sort of concentrations near Bangalore, Hyderabad area. There was one concentration near Mumbai, and then one in the Delhi NCR area. But most of the country really didn't have a startup culture. Now, 5 years later, that has completely changed. And this is, by the way, data as on 22nd of December. We have not even finished the year. And you can see a complete change. There are at least 555 districts in the country with at least one startup. This is quite incredible. And you can see it's scattered across the country. There's obviously the usual suspects, Delhi NCR area. There is Mumbai, Pune area. There's another hub near Ahmedabad. And I mentioned Bangalore. But you can see that there are hubs all across the country, whether it's in even near Patna and Lucknow, there are startups popping up, and even in parts of the country that, not historically associated with startup culture. You can see even in the Northeast, there are several of them popping up. So this is a real change in some ways in the animal spirits at a grassroots level. साथ ही देश में कोरोना महामारी के दौरान लाखों युवाओं ने अपनी जॉब को खोया है, जिससे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी भारी धक्का लगा है। The key here is the public sector generating jobs? Now, first of all, let me point out that there are many areas where the public sector is generating jobs. It may not be as government jobs. When you're talking about capital expenditure on infrastructure, that is also a government job being created by government spending. It may not that the contractors, workers may not be government employees. So there is that kind of job being created. And then, support jobs like Manrega, etc., are also forms of government jobs. But of course, yes, there's always been the case that there is a lot of demand for regular government jobs in India. This is not a new phenomenon, incidentally, and such incidents, by the way, have happened in the past as well, well before COVID-type situation. So there's been an attraction in India for regular government jobs, and we have always heard, even in my childhood, that so many lakh people apply for so many few number of jobs. So this is not a new phenomenon at all. But yes, I mean, there are a large number of vacancies in government, you're right, and they get filled every year. But let me just, since many people always come up with this number, X lakh number of jobs in the government sector, you get the impression that those are 8 lakh jobs and they're never being filled. That's not the case. Those are different jobs. Those 8 lakhs get filled and another 8 lakhs appears because it's a large institution and they are continuously churning. So be careful about taking a headline number and just interpreting it that they are not getting filled. That's not the case. People are retiring, people are leaving their jobs, new kinds of jobs are being, so there's a continuous churn going on. So please don't interpret these headline numbers as static numbers. आइए आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 3.9% पर रखा गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की ग्रोथ का अनुमान रखा गया है। वहीं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 8.2% पर रखा गया है। टीकाकरण दायरा बढ़ने से 2022-23 में वृद्धि दर को समर्थन मिलेगा। निर्यात में मजबूत वृद्धि और राजकोषीय गुंजाइश होने से पूंजी गति व्यय में तेजी आएगी। सरकार के निजीकरण को गति देने के लिए एयर इंडिया का विनिवेश महत्वपूर्ण कदम है। देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन चालू वित्तीय वर्ष में कैसा रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट एक तरह से आर्थिक सर्वे में होती है। आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक विकास दर को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर भी आर्थिक सर्वे में पूरा रोड मैप होता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर में कैसा प्रदर्शन रहा है, आगे कैसा रहने का अनुमान।
So today, of course, the spotlight will be on Finance Minister Nirmala Sitharaman. Yesterday, the spotlight was on President Kovind, yes, President of the Indian Republic, and a very important personality, especially yesterday because he had the honor and the distinction of inaugurating the parliamentary calendar. So the start of the budget session, the first session, and there was a joint sitting of both houses of parliament, and President Kovind was there in the capacity of the President of the Republic, speaking on behalf of his government, speaking on behalf of Narendra Modi, the Prime Minister, outlining the achievements of the Modi government. It was a speech written by the government for you, for I. Take a listen to some of the key points. पिछली बार की तरह इस बार का बजट भी कुछ मायनों में अलग होगा। आपको बता दें 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना महामारी की नई लहर के बीच आ रहे इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस बीच वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस बार भी बजट पेपरलेस रहने वाला है। इस बार लोकसभा के सभी सदस्यों के साथ दूसरे सभी लोगों को बजट की डिजिटल कॉपी दी जाएगी। वहीं इस बार 5 स्टार होटल के खाने के साथ 52 साल पुरानी परंपरा भी तोड़ी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार हलवा सेरेमनी का आयोजन नहीं किया जाएगा। आमतौर पर बजट की छपाई का काम हलवा सेरेमनी के साथ शुरू होता है। इसके बाद बजट तैयार करने में जुटे सारे अधिकारी मंत्रालय के बेसमेंट में चले जाते हैं और जब तक लोकसभा में बजट पेश हो जाता है तब तक वो किसी से भी नहीं मिल पाते। हालांकि इस बार हलवा सेरेमनी का आयोजन नहीं किया गया। बजट की तैयारी में जुटे लोगों को हलवा की जगह मिठाइयाँ दी जाएंगी। आपको बताते हैं कि आखिर ये हलवा सेरेमनी होती क्या है। हर साल नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी के साथ बजट की प्रिंटिंग शुरू की जाती है। वित्त मंत्रालय के ऑफिस में एक कढ़ाई में हलवा बनाकर बांटा जाता है। वित्त मंत्री हलवा खुद अपने हाथ से बांटती हैं। वित्त मंत्री के अलावा इस रस्म की अदायगी के समय अधिकारी मौजूद रहते हैं। हलवा सेरेमनी के बाद बजट की प्रिंटिंग से जुड़े मंत्रालय के करीब 100 कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बनी प्रिंटिंग प्रेस में अगले कुछ दिनों के लिए रहते हैं। एक बयान जारी कर बताया गया है कि इस बार भी बजट पेपरलेस रहेगा। इसे मोबाइल ऐप से भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने पिछले साल भी पेपरलेस बजट पेश किया था। इसके लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध इस ऐप को यूनियन बजट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा ये ऐप एंड्रॉइड और iOS के ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। बजट के सारे दस्तावेज वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। खास बात ये है कि वो एक से ज्यादा बार भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला है। इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार बजट पेश किया था जब वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास था। निर्मला सीतारमण इससे पहले भी बजट से जुड़ी परंपराओं में बदलाव कर चुकी हैं। उन्होंने जब अपना पहला बजट पेश किया, परंपराओं में बदलाव की तभी से शुरुआत हो गई। आजादी के पहले से ही बजट को चमड़े के ब्रीफकेस में पेश करने की परंपरा चलती आ रही थी। निर्मला सीतारमण ने इसके बजाय लाल कपड़ों में लिपटे बही खाते के रूप में बजट पेश किया। पेपरलेस बजट और हलवा सेरेमनी के बिना तैयारी शुरू करना भी इन्हीं बदलाव के आगे की कड़ी है। So we are looking ahead to the budget. In 40 minutes from now, Nirmala Sitharaman will present her fourth budget. Very important job, very important portfolio in any government, and finance ministers have gone on to occupy pretty important positions in the Indian government. Yes, they've gone on to become prime ministers, some have gone on to become presidents. Why don't we take a look at the career trajectory of some of those people? केंद्रीय वित्त मंत्री देश का अगला बजट पेश करने वाली हैं। ये बजट महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का चौथा और 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार का 10वां बजट होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के ऐसे वित्त मंत्रियों के बारे में जो बाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बने? इस सूची में 7 नाम शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं वो नाम। लिस्ट में सबसे पहला नाम है मोरारजी देसाई का।
देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया। अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। देसाई ने साल 1958 से साल 1963 तक वित्त मंत्री का कामकाज संभाला। फिर मार्च 1967 से जुलाई 1969 तक उन्होंने इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री के तौर पर सेवा दी। इसके बाद मोरारजी देसाई मार्च 1977 से जुलाई 1979 के बीच प्रधानमंत्री रहे। वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। लिस्ट में दूसरा नाम है चरण सिंह का। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह वित्तीय वर्ष 1989 में जनवरी से जुलाई तक वित्त मंत्री के पद पर रहे। इसी दौरान आगे चलकर जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। चरण सिंह के बारे में खास बात यह है कि वो बतौर प्रधानमंत्री संसद में नहीं जा सके और बाद में उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लिस्ट में अगला नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह का। वीपी सिंह का नाम भी ऐसे वित्त मंत्रियों में शामिल है जो कि आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। इनके बारे में बता दें कि इन्होंने दिसंबर 1984 से जनवरी 1987 तक वित्त मंत्री के तौर पर देश को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वह दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लिस्ट में चौथा नाम है इंद्र कुमार गुजराल का। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल ने भी प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। हालांकि वो बहुत ही कम अवधि तक यानी कि महज 11 दिन के लिए ही देश के वित्त मंत्री रहे थे। वहीं मनमोहन सिंह साल 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री के रूप में रहे थे। उन्हें भारत के सबसे उम्दा वित्त मंत्रियों में से एक कहा जाता है। उन्होंने भारत में लाइसेंस राज प्रणाली को समाप्त कर देश में उदारीकरण का रास्ता खोला था। इसके पहले वह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे। आर वेंकटरमन ने जनवरी 1980 से जनवरी 1982 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की सेवा की। वित्त मंत्री रहते हुए आर वेंकटरमन ने 3 बार बजट पेश किया। इसके बाद में उन्होंने अगस्त 1984 से जुलाई 1987 तक देश के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला। फिर जुलाई 1987 से जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति के रूप में देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद हासिल किया। लिस्ट में अब तक का फाइनल नाम है प्रणब मुखर्जी का। आर वेंकटरमन की ही तरह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी वित्त मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। मुख्यमंत्री जुलाई 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में 2009 से 2012 तक मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में वह वित्त It's going to be a digital budget like it was last year. The idea is to conserve paper, but also to not be printing the copies that they would print earlier because of COVID. You don't want to have a lot of people in a constrained space like the basement of the finance ministry. So that's an evolution, and which is great. There have been other changes in the traditions involved in the process of budget making. For example, we saw Nirmala Sitharaman show up with a tablet last year, and that was a move away from the old school ledger that she came with, the Bahi Khata, the year before, which in itself was a change from that tradition of carrying a briefcase, which the government said was a colonial hangover. So that certainly was one way to look at it. It was a British era tradition that had been carrying on until the Modi government came and turned it around. Of course, the Modi government, we know, is very big on doing things in a different way and being new and bold about the decisions that it takes. New normal, that's the buzzword with the Modi government. So let's take a look at some of these evolutions of traditions around the budget making process, and the ceremonies associated with the budget. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी।
2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनने के बाद बजट पेश करने की कई परंपराओं में बदलाव आया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी नहीं होगी। वहीं इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार में भी बजट से जुड़ी परंपराएं बदली गई थी। आइए आपको बताते हैं कि बीते सालों में बजट की परंपराओं में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले परंपराओं को बदलने की शुरुआत वाजपेयी सरकार में हुई थी। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बनी केंद्र सरकार में बजट पेश करने की वर्षों से चली आ रही एक परंपरा बदल दी गई। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए वाजपेयी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आम बजट पेश किया। यशवंत सिन्हा ने शाम की बजाय सुबह 11 बजे बजट पेश किया। सिन्हा ने 27 फरवरी 1999 को वित्तीय वर्ष 2000 के लिए बजट पेश किया था। बजट के समय में बदलाव के पीछे सिन्हा का कहना था कि बजट पेश करने के बाद इंटरव्यू का एक लंबा दौर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से देर रात तक जगने पर थकान हो जाती है। इसी कारण इसका समय बदलकर दिन में कर दिया गया। वहीं नरेंद्र मोदी की अगुवाई में साल 2014 में केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई। इसके बाद से बजट की तारीख बदल दी गई। मोदी सरकार आने से पहले बजट फरवरी के महीने की आखिरी तारीख 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदला और आम बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कर दी। मोदी सरकार ने 2016 में बजट में एक और बदलाव किया। 2016 से पहले रेल बजट को आम बजट से कुछ दिन पहले अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2016 में इसे बदलते हुए तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। तब से अब तक रेल बजट भी आम बजट का ही हिस्सा है। आजादी के बाद देश का आम बजट संसद में पेश होने के लिए एक ब्रीफ केस में आया करता था। मोदी की सरकार ने 2019 में इस परंपरा में भी बदलाव किया और लाल ब्रीफ केस के बजाय बजट लाल कपड़े में लपेटकर बही खाते के रूप में लाया जाने लगा। कपड़े के ऊपर भारत सरकार का चिन्ह था। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने इस बारे में बताया था कि ये भारतीय परंपरा है। ये पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है। ये बजट नहीं, बही खाता है। वहीं मौजूदा समय में कोरोना महामारी के चलते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे तेजी से बढ़ा है। बजट भी इससे अछूता नहीं रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 को संसद में एक टैबलेट के जरिए पेश किया। ये बजट टैब ने पारंपरिक बही खाते की जगह ली। यह टैबलेट बही खाते के सामान लाल रंग के कपड़े में नजर आया। So let me ask you this, what do you want from this budget? What do you want from this budget? Have you thought about what it is that might come up for you? Have you thought about how that might make a difference in your household budget? Have you thought about what it is that you might be saving on? Have you thought about how it might improve your wealth? Have you thought about how it might improve your emotional and mental well-being? Those are the questions we want you to think about. And joining me here now is Amit Arora. Amit, fantastic to have you. Amit is a chartered accountant by profession, and I have the honor of having him in the studio as my co-anchor. Thank you very much. Good morning to you, Parul, and happy Budget Day. Happy Budget Day. Hope it brings smiles on everyone once we hear Honorable Finance Minister, and we can tell all our viewers here at INS TV that right now the cabinet meeting is on under the leadership of Prime Minister at the Parliament House, and sharp at 11 we'll have Honorable Finance Minister present the Union Budget for the fiscal year 22-23 and all action live here on INS TV. Fantastic. So we're going to go straight and hear from you. You've been talking to us. Let's hear your expectations from Nirmala Sitharaman, and then we'll take this forward. इस बार बजट से तो काफ़ी उम्मीदें हैं, मोदी सरकार की बजट। और इस बार आम लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी जो है, कोरोना ने लोगों को तोड़ दिया है। लोग बहुत बेरोज़गार हो गए हैं। जो लोग भी बचे उचे जिनकी रोज़गार बची हुई है, तो वो लोग सब, हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली ये चाहते हैं कि इस बार बजट में सरकार जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 2.5 लाख से बढ़ा के कम से कम 5 लाख तक करे, ताकि सब लोगों को जीवन जीने में आसानी हो और उनकी जो कमियां कोरोना काल में हुई है, जितनी लॉसेस हुई है, चाहे बहुत से लोग को बहुत कुछ कमी हो गई है, तो कम से कम एक उम्मीद बंधे कि हम आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी
इस बजट से ये तो उम्मीद लेकर चले कि 2.5 लाख से बढ़ा के कम 5 लाख करे। अगर 5 लाख न करे तो कम से कम 3.5 लाख तो करे, ताकि लोगों को राहत मिले। और दूसरी एक है, हेल्थ सेक्टर में इतनी थोड़ी महंगाई हो गई, जीएसटी जो 18% लग रही है दवाइयों पे और हॉस्पिटल्स में, उसको घटा के कम से कम सरकार को 5% जरूर करना। आम बजट से मेरा ऐसा सोचना है कि हमेशा यही बात होती है कि चीज़ों के रेट कम हो, चीज़ों के रेट कम हो, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमारी कमाई बढ़े, तनख्वाह बढ़े, डीए लगता रहे। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी खरीदने की क्षमता बढ़नी चाहिए। आपकी मिनिमम कम से कम जो कमाई है वो इतनी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकें, उनके स्वास्थ्य पे अच्छा ठीक ठाक खर्चा कर सकें, उनको रहने की व्यवस्था दे सकें और उनकी शिक्षा बहुत अच्छी दे सकें। तो मेरी समझ से तो शिक्षा के ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा पे हम अपना बजट बढ़ाते हैं तो आगे आने वाले समय में परिवार नियोजन, आरक्षण या बहुत सी ऐसी सामाजिक कुरीतियों पे होने वाला खर्च हो सकता है, अपने आप हो सकता है। क्या मेरा विश्वास है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो इन तरह की चीज़ों पे होने वाला खर्च अपने आप कम होगा, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो वे उसका नेचुरली, जब आप मॉडरेटेड हो गए, आपको चीज़ें पता होंगी तो आपके उल्टे सीधे चीज़ें खर्चे कम होंगे। और रही बात बजट कम होने की, तेल आज की तारीख में अगर आप बोलते हैं पेट्रोल का रेट कम कर दो, तो पेट्रोल का रेट कम करने से क्या उसकी खपत बढ़ जाएगी? पहले ही जो कारें खूब बिक रही हैं, गाड़ियाँ खूब बिक रही हैं, मकान भी बिक रहे हैं, तो जिसकी ज़रूरत है वो तो खरीद रहा है। अब पहले जैसे हालात नहीं हैं, सरकारें भी बहुत मदद कर रही हैं। अब कोरोना काल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ, इसमें एक पक्ष और है। आप अगर कोरोना काल का अध्ययन करें तो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब लोग जो बाजार से सामान खरीदने जाते थे उसकी जगह ऑनलाइन ऐप से मंगाने लगे। तो समस्या क्या खड़ी हुई? ये जो हमारा तबका है वो भूखा रह गया और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास कमाई का बहुत बड़ा दायरा बढ़ गया। उनके पास इनके हिस्से का बिजनेस उनके पास पहुंच गया, क्योंकि लोग घर में रहे, वो ऑर्डर करेंगे तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्डर करेंगे। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसकी सिक्योरिटी बढ़े, लेकिन मुफ्त के रास्ते से ना बढ़े। वो मेहनत, उनको ऐसा रास्ता दिया जाए वो मेहनत करें जिससे उनको उसका उचित प्रतिमूल्य मिले। मैं अगर एक्सपोर्ट की बात करती हूँ, जब मैं अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करती हूँ तो हमारा जो प्राइस होता है वो जो बाकी देशों में उनका वो यही सोचते हैं कि हम रिपीटेडली यही 3-4 सीज़न वही वो दें, क्या वही प्राइस दें। और जो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे आप देख रहे हो कि कॉटन के रेट जहाँ पे एक 350 जो वो होता है कॉटन का जो बंडल होता है वो आके पहले 30,000 रुपीज़ पे मिलता था, फिर वो 50 हो गया, अभी वो 90 में पहुंच गया। अगर हम साउथ में जाते हैं, साउथ में जा रहे हैं तो वो लोग आके फैब्रिक खरीद ही नहीं पा रहे, यान खरीद नहीं पा रहे, एक्सपोर्ट इसके वजह से ख़राब हो रहा है। तो ये देखना चाहिए कि ये कॉटन का जो प्राइजेज़ हैं वो इतना हाई क्यों हो रहा है। और ये तो, और यहाँ पर अगर हम लोकली देखते हैं, लोकली इन लोगों को चाहिए, ये क्या है, इस वजह से कॉटन के रेट जो इतने हाई हो रहे हैं, फिर हम लोग आके पॉलिस्टर में जा रहे हैं। जो पॉलिस्टर जा रहे हैं तो फिर हमारे को वो भी हार्मफुल ही है। कॉटन में हम ऑर्गेनिक यूज़ नहीं कर पा रहे। हम वैसे पूरे देश दुनिया को हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं, बट हम अपने Counting down to the budget in just about 30 minutes from now, Nirmala Sitharaman will be in Parliament presenting the budget. Amit, you've been telling me about what's actually going on right now in Parliament. Yes, Go for absolutely. it. You know, it's a protocol that before the Finance Minister presents the budget, and that will happen sharp at 11 in the Lok Sabha. You've got the cabinet meeting that is happening right now. So the Prime Minister leads this cabinet meeting, and this is an occasion for all the ministers of the cabinet to actually know the nuances of the union budget and have the cabinet come on one common page before you present it in the Parliament. So of course, and secrecy is a big thing for obvious reasons, and we know that the Modi government is also very good at managing
one perception, two flow of information. So this is something that is going to be very easy for them to handle, right? to create a certain narrative. देखिए, बजट जब भी आता है उसमें एक परसेप्शन तो रहता ही है और साथ ही जनता की अपेक्षाएं भी रहती हैं, क्योंकि आप इस बात से इत्तेफाक रखोगे पारुल कि देश का बजट है लेकिन उसका असर आपके मेरे हर घर परिवार पे पड़ता है। Yeah. तो इसलिए हर कोई जानना भी चाहता है और इसलिए हम आग्रह भी करेंगे व्यूअर्स से कि आज हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम बजट की बारीकियों को सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, हाँ। What are you personally expecting out of the budget for you and your family? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने शुरुआत में कहा, हेल्थ बहुत ज़रूरी है और 1 फरवरी 2021 को भी जब वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया था बजट, जो 6 पिलर्स थे, उन्होंने सबसे पहले हेल्थ एंड वेलबींग पे फोकस किया था। और हेल्थ नहीं, होलिस्टिक हेल्थ। और मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा सा इसमें बताइए कि हम ये वर्ड तो यूज़ करते हैं होलिस्टिक हेल्थ, तो इसमें अब हम क्या समावेश करें, क्योंकि अगर सेहत नहीं तो फिर बाकी सब कुछ मिल भी जाए तो क्या करेंगे? No, that's absolutely true, and especially now, Amit, because of COVID, not just the physical health and the challenges that we face, but the stress that comes with the fear and the uncertainty and the anxiety about whether we are going to be healthy or not, whether we will have our job or not, whether I will have to take a pay cut, right? Yes. What is happening in the future? All of that is playing havoc in our minds. जी। So for me, holistic is first and foremost mental health, the ability to maintain my mental balance, Yes. and also spiritual grounding. Yes. If I'm not spiritually grounded, if there isn't a significant centering force in my life, मैं तो इधर उधर फेंकूंगी ना, Yes. like a kashti in a river. So for me, it's really important, mental and spiritual well-being combined with physical wellness, and then one is a proper economic actor. Then you step out into the world, you know, जी। to do what you need to do. बिल्कुल। और आप देखिए, जब पिछली बार हेल्थ एंड वेलनेस पे फोकस हुआ तो वहाँ पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की बात थी, जिसमें 6 साल में 60,000 करोड़ रुपए खर्चने की बात थी। तो आज देखना दिलचस्प रहेगा कि उसमें कितनी प्रगति हुई, क्योंकि लक्ष्य यही था कि जैसे भारत में तकरीबन 734 जिले हैं, तो हर जिले में अस्पताल हो, हर जिले में वेलनेस सेंटर खुलें ताकि लोग जांच करा पाएं। और हर्ष की बात यह है कि वेलनेस सेंटर में अब आप सिर्फ बीपी की जांच या डायबिटीज की जांच ही नहीं, वो तो जरूरी है, आप मेंटल हेल्थ की जांच भी कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है। It's foundational actually. Yes. So let's talk about the other thing which is important, which is on everybody's minds, पैसा, 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 पैसा. So there are two ways to look at money as far as I see it. One is मैं कितना बचाऊंगा, दूसरा is मेरा कितना पैसा बड़ा होगा, right? Which orientation do you take? Because I know which orientation I am towards. देखिए, पहले तो पैसा बचाना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे सिर्फ बैंक में ना रखें। आपके पास बहुत से अवसर हैं जहां पे आप वो पूंजी लगा सकते हैं, क्योंकि आप बजट को देखें, बजट क्या है, सरकार के कितने इनकम आई, सरकार के कितने खर्चे हुए। तो अगर हर घर परिवार भी एक बजट बनाए और देखे कि उनकी आय कितनी है और उनके खर्चे कितने हैं, कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करें। ये भी एक भ्रांति है कि जब मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊंगा तब सेविंग शुरू करूंगा। आप 100 रुपए भी कमाते हो, उसमें से भी 5 रुपए बचाइए। 100%. तो वो जो सेविंग है, Yeah. उसको फिर आप निवेश करिए, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट से आपके रिटर्न्स आएंगे, ग्रोथ होगी। अब इसके लिए जरूरी है कि आज किस तरह के कदम वित्त मंत्री उठाती हैं ताकि जो डिस्पोजेबल इनकम आपके और मेरे हाथ में आती है, एक नागरिक के हाथ में, वो थोड़ी ज्यादा हो। Yes, exactly. So it's not about कि it's not only about कि मेरा पेट्रोल का दाम कम हो गया या नहीं, ताकि मेरा वो खर्चा कम हो या मेरे 500 रुपए मेरे को ज़्यादा सब्जी खरीद पाएंगे या नहीं. It's actually having that mindset कि मैं इसको उगाऊं कैसे. How do I grow this fund that I have? Because we all do have. Yes. We are privileged and lucky enough to be in that position to have a certain amount of savings. So let's talk about that point that you mentioned. Could we expect new savings instruments? Could we expect tax incentives? Could for new instruments that they will bring for those tax benefits? Yeah, absolutely, both. See, आम नागरिक जब सेविंग्स करके पैसे उसके पास आता है, एफडी करता है। अच्छा, थोड़ा एफडी से आगे अब आप देखिए म्यूचुअल फंड, पिछले साल में काफी चर्चा हुई। अब म्यूचुअल फंड में भी आप डेट ओरिएंटेड और इक्विटी मार्केट में जा सकते हैं, फिर आप इक्विटी में ही जाइए, या आप कमोडिटी बाजार में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो आंकड़ा आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 साल से लगातार हर साल भारत में डीमैट के खाते बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे पैसे रखने हैं तो बैंक का खाता, शेयर रखने हैं तो डीमैट का खाता। अब अगर पिछले साल डीमैट के खातों में इतनी वृद्धि हुई है, इसका मतलब आम घर परिवार के नागरिक भी शेयर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन बाजार को समझना भी जरूरी है, और आप सिर्फ स्पेकुलेशन पे ना, आप वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लेयर रहें। तो आज जरूर वित्त मंत्री से अपेक्षा रहेगी कि जब इतने लोग डीमैट में आ रहे हैं
तो ना इसमें एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि आपने 12 महीने से कम शेयर रखा, बेच दिया, तो चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर 12 महीने से ऊपर रखा, आपको तब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 1 लाख की रियायत के ऊपर। So can we hope for a relief there? वन एक्सपेक्ट्स रिलीफ देयर। और यहाँ पर क्या है, आप जब भी शेयर खरीदोगे या बेचोगे, एक टैक्स लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। Right. उम्मीद है कि इसको थोड़ा सा हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए. That would be ideal. Let's unleash the animal spirits in all of us. You know what? What I am personally excited about is crypto. Right? It's a new frontier. Yes. I'm glad that we are trying to make sense of it as the government. Yes. What can we expect from the crypto space? And would you encourage just regular people like us Yes. to start to open our minds and learn more about crypto? You know, regular people in excess of 10 crores in Yeah. India Yeah. are already invested in crypto even as you and I speak. So I'm late in the game. Well, the new generation, Yeah. they are not only going with traditional assets like FD or mutual fund. Yeah. They want to park their money in what is known as digital assets. Yeah. And look at the Cricket World Cup that was organized last year. During that time, we had most of the advertisements of the exchanges dealing with cryptocurrency. Now that meant that even RBI had to take a notice of it. Yeah. And we remember RBI governor saying that it's time that we have deeper discussions on cryptocurrency. Go back to 2018 when RBI said probably we need to ban this. And then you had the Honorable Supreme Court saying no, we cannot ban it. So now we need deeper discussions. And in the winter session of the parliament in December last year, there was a talk that government may bring in the cryptocurrency bill. Right. But then government was also wanting to have some changes and think through it. Right. So it'll be interesting to see whether in the budget session of the parliament that opened up yesterday, 31st of January, Right. will the crypto bill be actually talked about? Yeah. But this is the fun part, right? This is the joy of being in government. You actually get to look at everything that's happening around you. Yes. Listen to the people on the ground. Yes. Look at the developments outside. Yes. And then chart a trajectory. Yes. You're leading 1.3 billion people. Such an Yes. honor. Yes. So the other thing that was on my mind, Amit, and I'm going to let you drive this conversation, is when we look around the world, this government is in not an exceptionally unique situation. All governments around the world are having to balance the imperative of driving growth and trying to drive growth while a pandemic is on. So you want to keep your people safe, but you want to open up and drive economic Yes. activity, right? So that's the context in which he's going to come out and Yes. explain what they बिल्कुल। have in mind. बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ भारत सरकार के लिए नहीं, विश्व में कोई भी देश हो, कोई भी सरकार हो, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना महामारी आई है, 2020 में पहली लहर, 2021 में डेल्टा वेरिएंट दूसरी लहर और नए साल के आगमन में ओमिक्रॉन, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा है। लेकिन अगर आप कल आर्थिक सर्वेक्षण में देखें तो अच्छी खबर ये है कि मौजूदा वित्त वर्ष 21-22 में भारत की जीडीपी 9.2% है। तो ये काफ़ी अच्छी रिकवरी है, क्योंकि उससे पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर आई तो कंट्रैक्ट हो गई थी इकोनॉमी 7.3%। Correct. और जो फोरकास्ट है आगामी वित्त वर्ष 22-23 का, वो भी अच्छा है 8 से 8.5%। तो ऐसा लगता है कि प्री पैंडेमिक लेवल जो ग्रोथ थी वो हमने काफी हद तक रिकवरी कर ली है। That's right. We've just प्रार्थना about got there. Now the game is to keep building on the Yes. momentum, And- because we've and- just about caught up. And COVID, doesn't come from here, and for which it's very essential that we follow that appropriate behavior. Yeah. That is very essential. And it's also important for the government to actually strengthen institutional mechanisms so that we have our surveillance systems good. We've got Yes. tons of data now about Yes, this, yes. us as citizens, right? Yes. But what do we do with all that data? Are we in a position to be ahead of the virus, or are we Yes. going to play catch up? Yes, absolutely. And I think this economy is a digital economy. Yeah. You've got millions and millions of data points. Yeah. And therefore, all the new jobs also that we're talking about, Yeah. or the startups, or Yeah. the business models, Yeah. they're all driven with capturing data points. Yeah. So whether it's health, whether it's wealth, today somebody can offer a product to Parul Malhotra. Why? Because we know your behavior. Exactly. And the company can customize a certain product according to your need. Yeah, which is scary also, but it does open up choices. I Yes. concede. Yes. Okay, we could talk forever, but we're going to go straight and get you some experts who are talking about their expectations from Nirmala Sitharaman.
though this is an election month, our budget this time will be growth focused because government has understood it's the growth which trickle down to taking care of everything else. And also, this is one of the unique years where revenue collections which government has had are far ahead than any previous years, and at the same time expenditures have been relatively lower. So government has a lot of room to announce on growth oriented measures, and government would do that by announcing government expenditure towards infrastructure, as revival of capex is foremost aspect that Indian economy actually needs currently to take the growth to next levels, and obviously to the aspirational numbers of 5 trillion GDP over say next 3 to 5 years. And at the same time there have been adversities, and I would say a lot of sectors have been affected by COVID, and government would also want to address some of those adversities in terms of driving those measures which revive rural growth by giving employment to rural India, and also towards agriculture at the same time, because taking care of that aspect is also important, and holistic growth of India's economy is something which is the aim of this government, and hence the growth is the core focus which we look forward to from government in terms of the announcement. Talent is very important for any industry. And as we are all aware that the workforce and their contribution during the pandemic helped us to get over the crisis of the pandemic and really help the industry to survive. We would request the government to give financial assistance for the upskilling of this workforce to create them into a better talent and also help this economy to grow. Secondly, we would request to increase the coverage of NAPs from 15% to 30%, as it would not only help in creating better employment opportunities for the young generation, but would also help us in creating the right talent for this industry, which is much needed for the growth of this industry. As you are all aware that BPO is one of the biggest industries and it is growing at a rate of 5.6% CAGR, which is pretty high. And for this, our request to the government would be to help in this endeavor of the industry to make it the labor force of this industry more conducive to growth. Thirdly, we would request the government to enhance the stipend from 1,500 to 2,500, because this would help the employer to spend more on the training of these people, and because of the training of these people they will be able to create a better talent. Fourthly, as we are all aware that in this industry majorly it is the salaried class, and our request to the government would be to enhance the limit on savings so that our tax liabilities gets reduced, and also help these people to spend more. And because of their spending more, obviously because of the velocity of circulation, all industries will see a growth. Since this is one of the biggest industry where manpower is absorbed, I think that this endeavor from the government or this support from the government would be highly appreciated. Budget 22 is perhaps the most awaited budget because of the 2 years of pandemic that we have gone through, and we are coming out of a disruption that has happened for last year. Let's look at what we are expecting. We do expect that the deficit will come down, but we don't expect that to come down sharply. We expect a nice gliding of 50 to 75% bips each year going for next few years. On the revenue side, tax revenue will continue with the buoyancy. We expect double-digit growth in terms of the tax revenues. On the indirect taxes, yes, everything is in play. We don't expect too much of upside there. But the main revenue earner is going to be all the divestment plans that have been talked about. LIC IPO, which is just around the corner, is going to be a game changer, and we have seen things happening with Air India and actual handover also happening. So divestment plan finally will come into play and will earn money for the government.
On the spending side, we have had a decade of low double-digit capex because of the sidling of subsidiaries that we are seeing. We do see that coming off and moving to mid to high double-digit capex spend, which will funnel the growth, and most of the capex will essentially be on infrastructure like roads, railways, ports, and so on and so forth, which will fuel the entire economy to the next level, including the states where there is spend on education, there's spend on water, there's spend of sanitation, and so on and so forth. Last but not the least, who will bring the money for these expenses? Of course, the traditional sources will continue, which are banks, insurance companies, and so on. We expect mutual fund, retail participation, GSECs also to participate. Inflows from bond infusions and FIIs will be significant contributor, and they will be a meaningful contributor going forward. So that's really how we see. I think in summary, time to execute and looking for. Just a few minutes to go for Mrs. Sitharaman to table the budget in Parliament. Let's get you the latest update. The cabinet meeting is finished and the Prime Minister is now free. He's making his way to the House. Mrs. Sitharaman, of course, now an expert. This is her fourth budget. And it's an interesting job, particularly this time. It's a challenging job, but she's also aware that she's got the eyes of the entire world on her, Amit, because India is the fastest growing economy, large economy. India is a massively exciting investment destination. India certainly has challenges, but the world also knows that it's an opportunity. And when we make good on the intentions, then we can grow even faster, right? Absolutely. So, Amit, I want to ask you about the government and its own numbers, its own accounts. जब हम कहते हैं कि ये budget है, so what are those expenses, those numbers, the big Yes. numbers, and their receipts? Yes, absolutely. So, like we discussed, budget is a very important statement that lists down the entire income for the year and the expenses. So, financial year, of course, for the government in India is 1st of April through the 31st of March next year. So, if we focus on the current fiscal year, 21-22, the numbers that were presented in the last budget, the expenditure budget is a round figure 35 lakh crore. It's 34.83. कितने zero होते हैं उसमें? 10 raised to power 12. बहुत सारे. Yeah, so it's a trillion, right? 10 raised to power 12. So 35 lakh crore, for easy understanding, is the expenditure that Indian government is going to do. And what's the revenue? It's about 20 lakh crore. तो shortfall है. That's a shortfall of 15 lakh crore. So that's our borrowings. And that is what makes the fiscal deficit. Right. So the effort will always be, how can I look for innovative methods of revenue? Right. From where can I get the revenue? Okay, right? so मैं बोलती हूँ tax collections and non-tax. Yes. Right. Yes. But if we get more from tax, you are not going to be happy. Citizens are also happy. Yes. You don't want to put too much of tax burden. And that is the political imperative behind any budget. And also because you want to keep more disposable income in your hands. Yeah. Why should I withdraw more tax from you? I Yeah. would like to keep some money from you. Yeah, but why? है ना? No government wants to tax, you Yeah. see, because it depends on, it impacts their ability to be re-elected. Yes. So for the taxpayer also, it's essential to know that we are citizens of the country, and like the Constitution says, we have fundamental rights and duties. So when I earn and I am doing wealth creation, I should also pay tax. Pay tax, karo, relax. So the idea is to broaden the tax base, right? Broaden the tax base. That's a good point. That has been an intention of several governments over several years, and Yes. that is part of the gap in reforms, right? Yes. We haven't been able to increase that tax base. Yes. What is the structural problem here? You know, one of course is we need more financial literacy. तो जिस तरह से आज़ादी के 70 साल में हमने साक्षरता पे बल दिया और अब भारत में 80 से 85% साक्षरता दर है, केरला में तो 100% है, मुझे लगता है अगले 5 साल स्ट्रक्चरल आप वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्कूल्स में इसको करिकुलम का हिस्सा बनाएं. आज बजट हर कोई देखे, INS टीवी से जुड़े, सरलता से समझे, सवाल पूछे कि आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं. Somewhere should that thinking change from, instead of like मेरे लिए सरकार क्या कर रही है, to feeling more empowered about making decisions that serve us financially? Yeah, I think it's both.
people have to look at their vested interest, which is fine, but then collectively we all make the nation. तो जब पर्सनल टैक्सेशन की बात आती है, लोग कहते हैं जी मेरे टैक्सेस कम कर दो, है ना? सो आप ये भी तो बताएं फिर और रेवेन्यू कहाँ से लेकर आएं, और फिर ये भी देखें कि सरकार भी देख रही है कि हम इंसेंटिव कैसे दें. जैसे पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आया कि आप उत्पादन बढ़ाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे. We are expecting that to expand, no? Yes. They're bringing in more subsectors. Yes, we've got 13 sectors so far. So in today's budget, one expects a few more sectors to get added on that list. You know, one point on non-tax sources of revenue, disinvestment, and I think we should be fair in saying that it's a flash in the pan. Even Air India is a flash in the pan. So very, very big lofty intentions and nothing really rolling out, and it's not really because of the pandemic, because we know many governments have talked about disinvestment and nobody has actually bitten the bullet politically. Yes. So do we agree that there is a political problem here? See the numbers. So the budgeted figure for the current fiscal was 175,000 crore, right? How much have we done it this fiscal? So we have done 10,000 crore so far. Yeah. And that includes Air India. Yeah, that includes. So I know that there's a 94% gap. Between what they promised and what they've delivered. Yes. 94% gap. Yeah, and we've done Neelachal Ispat now, so that's another 12,000. So that's about 20,000. So 175,000 is what the figure was, and we've done 20,000. Right? That's the big gap. So it's about 6 to 7%, or maybe less than 10% for sure. So a whopping gap of 90%. Right? But as I said, since government don't want to have reliance only on tax sources, they would certainly like to have other options. And you probably would hear more on disinvestment today from the finance minister, and one expects that this fiscal, at least the coming fiscal, we can actually, because there was talk of privatizing 2 public sector banks in the last budget, 1 general insurance company, and a huge list of other companies. So I'll tell you what, we're just looking out for what's happening in Parliament. I'm just suggesting what we hear from experts, that if there was really an intention within government, we would have probably seen more progress. Yes, and look at the watch, it's 11. That is also the time for us to cut across to the Honorable Finance Minister, because it's everything in readiness for her to present the Union budget on the floor of the House for the fiscal year 22-23. Right, so while we wait for that live transmission from Parliament, Amit, what about indirect tax? Listen, the point is that we need to spur investment, you need big companies to invest. And big companies to invest are saying, please help us make those decisions by freeing our hands, by giving us relief on the corporate tax front. So how does that picture look? Well, the Parliament session is just starting. In quick word, that's the role of the GST has come down because of the GST Council's role, right? So today we'll expect rationalization of custom duties from the Finance Minister. All right, cutting straight across to Parliament. माननीय सदस्यगण, जैसा आपको समाचार 2 के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker,
Honourable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honourable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead-up to India at 100. Honourable Prime Minister, in his Independence Day address, had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle-income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23.
प्लीज The नो, National Bank आपको for पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर मिलेगा, बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. the National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big private-public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition, and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders
and improve international competitiveness, open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvat Mala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains,
a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C, and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling, and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds.
This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance ramp program with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM eVidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center and International Institute of Information Technology, Bangalore,
IIT Bangalore providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy,
direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honourable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavour to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances, crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel.
By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business-as-usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System, NGDRS, with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit,
pace, will process re-engineering will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation
that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honourable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honourable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations,
extended producers' responsibilities framework and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honourable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure, with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC.
World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital, for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Infrastructure status, data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23,
I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honourable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honourable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honourable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech. Direct tax. Honourable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for Yoga Kshema
which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with Dharma, along with collecting taxes which are in consonance with Dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honourable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honourable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee.
However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional High Court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional High Court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department.
Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honourable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So, remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax.
There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In Part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the Customs National Portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide,
to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last two budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year to disincentivize import of undervalued imitation jewelry. The customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honourable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel,
unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनने के बाद बजट पेश करने की कई परंपराओं में बदलाव आया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी नहीं होगी। वहीं इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार में So incredible, on time, Amit. Absolutely. 12:30 Indian Standard Time redefined by Nirmala Sitharaman. Lots of interesting things. Didn't hear too much on the taxation front, which would impact us directly, but a couple of important announcements. Absolutely. So the tax structure remains the same the way it was. You got the old regime and the new regime where the SSC can choose. But if I were to ask you one pick, what will Parul say the best about this budget? The best about this budget, Amit, first my heart has sunk because 30% tax on crypto, which is close to my heart. But what I like is the National Mental Health Program. Yes, it sounds yes. very exciting. Yes. And it was very close to my heart. Mental health nahi hai, kuch nahi hai. Ji. Right? So I'm really, really pleased that they've focused on this and looking forward to understanding what it is that they have in mind, mental health, tele-mental health. बिल्कुल, जब भी सेहत की बात होती है तो संपूर्ण सेहत बहुत ज़रूरी है और उसमें शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत पर बल दिया गया है। और नेशनल टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम में आखिरकार क्या होगा ये जानना दिलचस्प रहेगा, लेकिन डिजिटल पे भी बहुत फोकस रहा। Digital currency. Yes. India's digital currency. I think that would really, really, really stay in my mind. Yes. How many countries have digital currencies? I think with each passing day, probably that list will only grow stronger. Yeah. But how does it sound that India is going to have a digital currency of its own? It So you'll sounds have very cool. a digital rupee Yeah. issued by the RBI using blockchain technology. That's phenomenal. Very, very progressive thinking. Can't wait for things to start to roll out on the ground. Absolutely. But like you mentioned, there will be tax on the virtual digital asset because like we were discussing ahead of the budget,
from traditional asset. The younger generation is very keen on investing in digital asset. Yeah. So now if you have a virtual digital asset, you can have that, but there will be tax on it. So if you transfer, there will be 30% tax on it. There's a TDS element that has been brought, and also the Minister Nirmala Sitharaman did mention that if there is any loss when you transfer, that loss cannot be adjusted. I'm so pleased to have this man in the studio. He's a CA, so he does really know this stuff. Speaking of you being a CA, Amit, you must be happy, no? Yes. There's one announcement there that is helpful. Yes, absolutely. This is about the returns. Now, all these years, say for example, Parul has earned a lot of money from 1st of April till the 31st of March. What's the last date for filing return for you? 31st of July. Okay. Or if you miss that deadline, then you can file till the 31st of March next year. But not after that. After that, the notice will come if you have not paid your taxes properly. Yeah. But now, after the due date and the belated return, you have another option, updated return. So I'll have to give them some penalty. Well, let's see what they ask for, but of course you have to pay the tax, and it's like a voluntary mechanism where you later realized that some income skipped in your return. Right. Here's a chance for you over the course of next 2 years. Yeah. Please come clean on it, Very pay the good. taxes, and you'll be more than happy because you won't have to go through that complex adjudicating process. Yeah, so they're trying to keep compliance clean. Yes. That's good. So what happens if I've already been served a notice? We don't know. I think if the department has already served you a notice, then probably you've lost the opportunity to file the updated return, because it's like department has already put the notice to you. Yeah. But again, a good move to widen the tax collection. And giving flip to the Voluntary moral values. compliance. Moral values. Yes. I mean, there can be Why a should there genuine. be a Danda Raj? Yeah, and there can be a genuine case where after having filed the return, I realized, oh my God, I did this transaction and I just didn't incorporate that in the income tax return. Yeah. I have a genuine window of 2 years now. Yeah, good. Big picture dekhe. Yes. I made a note of the fiscal deficit target. We talked about the fiscal deficit. Yes. It's important because especially international investors, they see the fiscal deficit as a barometer Yes. of the health of the economy. So Yes. obviously the government is mindful that they want to stay within the window. So Yes. what has happened there? That they have targeted a moderate reduction in the fiscal deficit from Yes. 6.9% for 22 to 6.4% for Yes. 23, Right. which is decent. Yeah, because It won't freak anybody out. Yeah, and because we want government to do the expenditure. Yeah. Because when you do pump in money, say in infrastructure, in agriculture, that is where employment gets generated, right? And India is recovering well post the pandemic. And one hopes that all of this expenditure will come handy. So even if it means that you have some fiscal deficit, we'll live with it Yeah. for the time being, because it's a difficult task to do a balance between both. और क्या आपको strike किया? कोई Would you tax like- incentives? I think, as far as tax incentive is concerned, bulk of the focus has gone to the digitization itself. Usually one expects that there will be some tinkering in the tax slab. That hasn't happened. So all these years you've now become very comfortable knowing that for first 2.5 lakh, no tax. That's how it stays. From 2.5 lakh till 5 lakh, it's 5%. Right. Right? From 5 to 10 lakh, it's 20%. Right. Above 10 lakh, it's 30%. This is Right. for somebody who's lesser than 60 years of age. Right. If it's a senior citizen above 60, less than 80, Right. then that 2.5 lakh threshold is 3 lakh. It stays like that. Right. And for super senior citizen, 80 years plus, the threshold is 5 lakh. So there's no change whatsoever. You've got the option of choosing either the old tax regime or the new tax regime that was brought in 2020, where there was a reduction of tax rates, but you didn't allow the deductions and exemptions like house rent allowance or even standard deduction. So good point that there's no change in the Stability. tax slab. Yeah, there's stability, There's in the stability. tax structure. So tax structure में तो stability है. Of course, corporates have also been saying कि अपनी broader economic policy में भी आप stability Yes. और continuity रखिए. Yes. क्यों? Because of what happened with the farm bills, for Yes, example. yes. It's that kind of uncertainty that investors don't like. Right. Any clues in what we heard from Nirmala Sitharaman on whether it's something that they have been mindful of? Yeah, I think that see, the idea is they're not increased as such, even from the corporate perspective. Yeah. So I think corporate should also welcome that, and it'll be interesting That to see. no new dhakka in that sense. Yeah, and it'll be interesting to see how corporates react. But as far as the cooperative tax was concerned, that was reduced to 15%. Right. But you talked about the farm bills. It was very interesting to see what emphasis will be laid on agriculture. Ah. So there is substantial emphasis, particularly where the finance minister mentioned that by 2025, all villages will have access to optical fiber. So while one gave fillip to the urban economy, it's very essential for India to grow at a faster pace. The rural economy also has to pick up. So if you've got optical fiber laid down, right,
5G auction also happening by 2023. You know, all this digital platform that we're setting, it is not just that the urban people will have access to Yeah. it. You know, the digital divide has to go. We've seen how in last 2 years when we had online education, students who had access to laptop or, you know, the latest smartphones. Actually, that's a really important point, because one of the tragedies of COVID, Yes. not just the loss of lives, but the Yes. loss of schooling, the Yes. loss of the years for kids. Yes. And I was reading some, report which said that once children are out, like there's a very high number of percentage of kids who will not actually get to go back to school Right. from a certain Right. strata of Yes. society. So that is a phenomenal setback to human capital. right? Yes, absolutely. So yes. in that context, the idea of a digital university seems interesting. I think digital university is a very good idea, and it sounds so good on the ears. It'll be interesting to see how it'll operate. But you're right, for the last 2 years, many people who have not had the digital equipment and therefore lagged in their education. How will you get them back to the studies, right? That's going to be a real big challenge for nations across the globe. The other thing that was on my mind was Yes. what's happening on the infrastructure front. Any big announcements? I'm not sure I actually caught anything on capex. Not to say that capex won't increase, it Yes, will increase, but yes. I don't think I saw anything that was headline grabbing there. Well, I think they've certainly increased the allocation. So there is a upper ceiling of 7.5 lakh crore. So one expects a sizable chunk of the expenditure budget to go into infrastructure. So if you talk about the Pradhan Mantri Gati Shakti program, it has got many engines. That includes rail, that includes the road transport, the port, and the best part of pumping in more money infrastructure is it will clearly lead to more employment. Yeah. And infrastructure also leads to more productivity. Look at the highways that have been created and how easy it is for us to say from Delhi go to Jaipur or, you know, to some of the other part of the UP or Rajasthan. Yeah. It's, you know, so infrastructure has got multiplier effect. That's right. And a lot of experts had been hoping that the government would actually spend their way out of the situation that we are in, which is not bad. There is growth, but we want to improve the momentum that the You know, country is one enjoying. more sector that has actually been benefited this time is the hospitality sector. You'll agree, Parul, that last 2 years in COVID, the contact-based sector, Yes. right, dine-in restaurant, Yes. you know, suffered. Parlors. Parlors suffered, Yeah. right? Yeah. There has been an announcement where government is going to help the sector. So there has been an allocation dedicated to the hospitality sector. I think the hospitality sector needed it badly, and with this announcement, there will certainly be, there'll be buoyancy in the hospitality sector. Yeah, but it's interesting, see, this is the beauty and complexity of a country like India and its federal setup. Yes. So you will have the central government saying, yeah, we want to encourage contact-based Yes. service industries, Yes. and then states will start to have their own lockdown Yes. restrictions. Yes. Right? So the right hand wants to do something, Yes. and the left hand will not necessarily be in tandem. Right. But just to say that it is a complex country and it's a federal country, there is increased allocation to states for finance. Yes, I think that Finance Minister did mention about the new pension scheme Yeah. and the tax incentive there for the state government employees, bringing them at parity with the central government employees. So that'll be nice because pension is an important social security scheme, right? So whether it is the employee provident fund, right, or the pension scheme, both of them come very handy when people superannuate. And even the younger lot who's working today, even in the private sector, they have to realize that even if they're getting 100,000 per month salary, they need to develop this habit of saving and putting some money aside for the social security. So for the state government employees to be at par now with the central government, as far as the new pension scheme is concerned, I think would be a very welcome step. And we are talking about millions, no? Yes, of course. Yes, Wow. millions. The other thing that I noticed was extension of incentives for startups. Yes. Tax incentives. Yes, period. absolutely. See, Another if you look at last 2 years, COVID, we have struck a half century. 50 startups that have become unicorn. A unicorn is where a startup has a valuation of over $1 billion, right? So converted rupee, that's in excess of 7,300 crores. 7,300 crores. So we have 50 unicorns last 2 years. Now, last 2 years, that means COVID. Notwithstanding COVID, we had a half century of unicorns. Now, with the entire startup culture, right? And you've seen how even the popular series of investment has also become so popular. Yeah. That meant that this culture needs more incentive. Yeah. And they'll be very heartened that the extensions have come, well deserved.
It's a very good digital currency. Why are they taxing our digital? Well, it's an at asset. 30%? It is an asset in your hand. At 30%. Why not? No, but the point is, like, if you want to encourage, Well, look at the income is tax there a slab. consistency in the thinking? See, is 30%. my challenge. Well, 30% on the face of it does look It's high. heavy. But please understand, you can start high, and if you realize that taxes are coming, you can lower. But if you keep it lower, it's difficult to go the other way, right? I'll concede that point for now. Yes. All right, great. So we're going to dip into this beautiful story on Nirmala Sitharaman and her team, because the finance minister is not doing this by herself. She's the face of the budget, but she's got a whole bunch of people working with her. So let's take a look at her team. मोदी 2.0 सरकार का चौथा आम बजट पेश होने जा रहा है। सभी को इंतजार है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए बजट पिटारे से किस सेक्टर के लिए क्या ऐलान निकलते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर चौथी बार संसद में बजट पेश करेंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बजट को तैयार करने के पीछे कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? आखिर देश का ये बजट कौन तैयार करता है? इस बार वित्त मंत्री की बजट टीम उन्हें मिलाकर 6 लोगों की है। आइए जानते हैं कौन कौन है इस टीम में। देबशीष पांडा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव हैं। बजट में वित्तीय सेक्टर से जुड़े सभी ऐलान उनकी जिम्मेदारी में आते हैं। वो 1987 उत्तर प्रदेश बैच के आईएएस हैं। पांडा पर वित्तीय सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम करने की भी जिम्मेदारी है। पांडा सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों में अगली पीढ़ी के सुधारों की नींव रखने में सहायक रही हैं। सोमनाथ व्यय विभाग के सचिव हैं। वह विश्व बैंक में काम कर चुके हैं और बतौर संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोमनाथन व्यय विभाग के सचिव हैं। वह विश्व बैंक में काम कर चुके हैं और बतौर संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोमनाथन 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं। सोमनाथन के सामने डगर कठिन है, क्योंकि उन्हें वित्तीय लक्ष्यों पर भी नजर रखनी है और ग्रोथ के लिए फंड भी उपलब्ध कराना है। तरुण बजाज वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं। वह 1988 हरियाणा बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय ज्वाइन करने से पहले बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। वह कोरोना की पहली लहर के दौरान आर्थिक मामलों के सचिव के तौर पर वित्त मंत्रालय से जुड़े और उन्होंने कई राहत पैकेजेस पर काम किया है। 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज को आकार देने में बजाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तोहीनकांत निवेश व सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। उन्होंने अक्टूबर 2019 में DIPAM सचिव का पदभार संभाला। तोहीनकांत पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। पांडे ने एयर इंडिया के निजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अजय सेठ को पिछले साल अप्रैल में आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। वह 1987 के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सेठ कर्नाटक में बजट व संसाधनों और वाणिज्यिक कर विभाग को संभाल चुके हैं। उनके पास एक कठिन टास्क है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ने ताज़ा रिकवरी को प्रभावित किया है। इन्हीं सब मोदी 2.0 सरकार का चौथा आम बजट पेश होने जा रहा है। सभी को इंतजार है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए बजट पिटारे से किस सेक्टर के लिए क्या ऐलान निकलते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर चौथी बार संसद में बजट पेश करेंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बजट को तैयार करने के पीछे कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? आखिर देश का ये बजट कौन तैयार करता है? इस बार वित्त मंत्री की बजट टीम उन्हें मिलाकर 6 लोगों की है। आइए जानते हैं कौन कौन है इस टीम में। देबशीष पांडा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव हैं। बजट में वित्तीय सेक्टर से जुड़े सभी ऐलान उनकी जिम्मेदारी में आते हैं। वो 1987 उत्तर प्रदेश बैच के आईएएस हैं। पांडा पर वित्तीय सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम करने की भी जिम्मेदारी है। पांडा सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों में अगली पीढ़ी के सुधारों की नींव रखने में सहायक रही हैं।
सोमनाथ व्यय विभाग के सचिव हैं। वह विश्व बैंक में काम कर चुके हैं और बतौर संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोमनाथन व्यय विभाग के सचिव हैं। वह विश्व बैंक में काम कर चुके हैं और बतौर संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोमनाथन 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD हैं। सोमनाथन के सामने डगर कठिन है क्योंकि उन्हें वित्तीय लक्ष्यों पर भी नजर रखनी है और ग्रोथ के लिए फंड भी उपलब्ध कराना है। तरुण बजाज वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं। वह 1988 हरियाणा बैच के IAS अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय ज्वाइन करने से पहले बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। वह कोरोना की पहली लहर के दौरान आर्थिक मामलों के सचिव के तौर पर वित्त मंत्रालय से जुड़े और उन्होंने कई राहत पैकेजेस पर काम किया है। 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज को आकार देने में बजाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तोहीन कांत निवेश व सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। उन्होंने अक्टूबर 2019 में DIPAM सचिव का पदभार संभाला। तोहीन कांत पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं। पांडे ने एयर इंडिया के निजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अजय सेठ को पिछले साल अप्रैल में आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। वह 1987 के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। सेठ कर्नाटक में बजट व संसाधनों और वाणिज्यिक कर विभाग को संभाल चुके हैं। उनके पास एक कठिन टास्क है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ने ताजा रिकवरी को प्रभावित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं INS TV। विश्व फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। बजट भाषण उनका 1.5 घंटे का रहा और उसमें कई नई चीज़ों पर बल दिया गया है। आइए इन्हीं बारीकियों को समझते हैं। मैं हूं अमित और यहाँ स्टूडियोज़ में चर्चा के लिए मेरे साथ हैं रोहित वैद। नमस्कार रोहित जी, आप बिजनेस एडिटर हैं INS में, और साथ ही रजत मोहन हमारे साथ हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका स्वागत है रजत। तो रजत जी, पहला सवाल आप ही से करूँगा कि मोटे तौर पे आप बजट को कैसे देखते हैं? मोटे तौर पे बजट पे जो भी चेंजेस हुए, वी सी लॉट ऑफ चेंजेस फॉर आई विल से बिग इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स, जहाँ पे द हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज हैज बीन लिमिटेड टू फ्रॉम 37% टू 15%। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि विल इम्प्रूव द टैक्स स्लैब्स, जहाँ पे एक 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख कमाने वाला आदमी है उसको कुछ राहत मिलेगी। वो सब राहत बजट स्पीच पे नहीं नजर आई। सिमिलरली सेक्शन 80C की कुछ डिडक्शन से वी वर थिंकिंग कि जिसका 1.5 लाख का टर्म लिमिट है वो बढ़ा के 3 लाख, 4 लाख, वैसा कुछ बेनिफिट इंडिविजुअल्स को नहीं मिला, आम आदमी को थी। और आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे रोहित? जैसे कि हमने कल ही बात की थी INS TV पे कि बजट के मेन फोकस एरियाज क्या होंगे, एंड पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स हुई तो क्लियर थी शुरुआत से कि केपेक्स जो कैपिटल का टारगेट FM ने आज दिया है, अराउंड 9.2% का जो ग्रोथ का टारगेट दिया है, ये वहीं से ही आने वाला है। तो पिछली बार जैसे 5.5 लाख करोड़ था कैपेक्स, उसे बढ़ाया गया, उससे 35%। तो बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में इन सबको सम अप करूं, सबसे एक्साइटिंग चीज इस बजट की रही है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो सरकारी इन्वेस्टमेंट होती है केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 35.4% तक के उन्होंने बढ़ाया है। 5.54 लाख करोड़ जो पिछले साल उन्होंने दिया था, अच्छा। इस साल 7.50 लाख करोड़ है। अच्छा। एंड इफेक्टिवली उन्होंने बताया है कि 10 लाख करोड़ के आसपास का ये रहेगा। तो ग्रोथ के ऊपर ही फोकस है। जैसे कि पहले भी हम लोग ने बात की हुई है कि जब से ये सरकार आई है 2019 से 3 साल इस सरकार के पेंडेमिक से लड़ने में जा चुके हैं। तो ये एक ऐसा बजट, ये एक ऐसा मौका था जहां पे FM के पास अपने आप को, खैर मैं ये नहीं कहूंगा प्रूव करने का मौका था, पर सरकार को कुछ वापस ग्रोथ पे एक इम्प्यूटस डालने का मौका था, और वही उन्होंने किया। 75th इंडिपेंडेंस जो ईयर की जिसकी बात कर रहे हैं, इससे आने वाले 25 साल में क्या भारत होगा, कैसे भारत होगा, अर्बन डेवलपमेंट कहां पे होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन कहां पे होने वाली है, एक तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया। 4 एरियाज बताए हैं प्रायोरिटी के, जहां पे उन्होंने
गति शक्ति और बाकी और चीजें भी थी उसके अंदर, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली अपना फोकस एरिया उन चीजों को रखा है। और मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल, चाहे टैक्स रिलीफ में लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद होगी और थोड़ी बहुत उम्मीद टूटी भी होगी लोगों की, बट ऑल इन ऑल ये ग्रोथ को लेते हुए, इंडिया की इमेज को लेते हुए, कि फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप कैसे सस्टेन करने वाले आने वाले साल में, और फिस्कल डेफिसिट को कैसे मेंटेन करने वाले आने वाले साल में, सब चीजों को लेके एक वेल बैलेंस्ड बजट मेरे को ये दिखाई दिया। ओके, वेल बैलेंस्ड बजट है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस है और ग्रोथ बजट हम कह सकते हैं। रजत, डायरेक्ट टैक्स के लिहाज से बताइए, डिजिटल करेंसी आई है और उस पर जो टैक्स है वो भी कैसे इम्पैक्ट करेगा? हाँ, तो फॉर दिस बजट आई सपोज people were expecting that there will be clarity with regard to digital currencies, right? So now अभी वो clarity मिल गई है कि digital currencies buy and sell would be taxed at the rate of 30%, और जितना आपने इन्वेस्ट करा सिर्फ उसी का डिडक्शन मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है इन अ बिजनेस, सो इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस तो उसमें मैंने सैलरीज भी पे करता हूँ, सामान खरीदता हूँ, बेचता हूँ, सो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ परचेज विच विल बी रिड्यूस, देयर इज अदर ओवरहेड सैलरी विच इज नॉर्मली रिड्यूस्ड इन अ बिजनेस, राइट? बट फॉर डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी एसेट, उन्होंने बोला हम सिर्फ एक ही खर्चा अलाउ करेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एंड द बैलेंस वुड बी टेकन एज अ प्रॉफिट, जिसको 30% पे टैक्स करा जाएगा। उदाहरण से समझाइए, मान लीजिए कोई एक निवेशक क्रिप्टो करेंसी खरीदता है 1 लाख की, राइट, फिर और उसको बेचता है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, तो 50,000 उसका ग्रॉस मार्जिन हो गया, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। उसके बट उसको करने के लिए उसने एक भी ली है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, 2 लोग रिसर्च के लिए भी रखे हैं, उनकी भी सैलरीज इंकर हो रही हैं, समझिए 10,000 रुपए टोटल ओवरहेड। तो नेट प्रॉफिट जो उसने बनाया वो है 1.5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि 40,000 उसका प्रॉफिट है, जिसपे नॉर्मली उसको टैक्स पे करना चाहिए एज पर इनकम टैक्स लॉ। बट ये स्पेसिफिक लॉ रहेगा जहां पे सिर्फ 1.5 लाख माइनस 1 लाख यानी 50,000 पे 30% के दर से टैक्स देना है। तो उसको 50,000 पे 15,000 रुपए टैक्स, 15,000 रुपए टैक्स देना है, अगर 40,000 पे टैक्स नहीं देना। उसको नुकसान अगर हुआ इसमें तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। और वो कैरी फॉरवर्ड, अगर उसने 1.5 लाख का एसेट खरीदा और बेचा 1 लाख रुपए का, तो उसको टैक्स नहीं देना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, सेट ऑफ नहीं है, इट्स मोर लाइक अ स्पेकुलेशन बिजनेस, उन्होंने इस तरीके से उसको डील करा है। ट्रेडिशनल करेंसी तो हमें पता थी, डिजिटल करेंसी हो गया भारत की, आरबीआई इसको लॉन्च करेगा। एक्चुअली में ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है जो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सुनते हुए आ रहे थे कि आरबीआई ने अपोज किया है क्रिप्टो करेंसीज को, अब आरबीआई खुद इसमें जाने वाला है, तो एटलीस्ट एक पॉलिसी के हिसाब से हमें एक क्लियर रोड मैप मिला है। यहाँ से भारत में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी, ऐसा कहा जाता है, कुछ एस्टिमेट्स हैं जो ऐसा कहते हैं। एंड इसकी वजह से एक फियर भी था कि अगर जो वॉलेटिलिटी आती है क्रिप्टो करेंसी में, उससे कौन इनको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटर तो है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। तो इसी वजह से अगर आरबीआई भी एक डिजिटल रुपी के साथ आ रहा है इसमें, एक तो पहला तो एक वो पॉइंट हो गया कि एक पॉलिसी क्लैरिटी दी गई है यहाँ पे। जो दूसरा पार्ट है इसी के अंदर, जो टैक्सेशन के बारे में बताया कि इससे पहले तो कोई टैक्सेशन इसके ऊपर था नहीं जी। और अब एक मेरे को जितना पता लगा है कि लॉटरी में भी जो 30% का जो टैक्सेशन लगता है, वही अगर जब इसमें लगाया जा रहा है, तो आप एक गवर्नमेंट का माइंडसेट आप अगर देखें तो वो चाहती है कि रादर देन, एंड ऐसा मेरा मानना है, ये उन्होंने बोला नहीं है उतने सारे वर्ड्स में वहां पे, बट वो चाहते हैं कि आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करें तो आप आरबीआई के क्रिप्टो में, एक डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करें, किसी और में भी करेंगे, जैसे आरबीआई पे भी वो शायद तक कि आरबीआई की डिजिटल रुपये पे भी 30% लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है, वो कोई भी रेवेन्यू का मिल रहा है, बट वो इस चीज को प्रमोट उस हिसाब से नहीं करना चाहते जिस हिसाब से दूसरे एसेट क्लासेस को शायद तक के थोड़ा बहुत एलटीसीजी पे मेरे हिसाब से उन्होंने 15% की भी बात की है, फ्रॉम 30% टू 15%। ये पॉइंट बताइएगा रजत जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बदलाव है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नॉर्मली मैं जो आपसे शुरू में भी कह रहा था, बड़े निवेशक जो होते हैं उनके ऊपर एक सरचार्ज लगता है, एक पर्टिकुलर इनकम को जब वो क्रॉस करते हैं तो सरचार्ज 37% लगता है, 37%। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने गोइंग फॉरवर्ड क्लैरिटी दी है कि जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ सरचार्ज है
on LTCG it will be reduced और it will be capped to 15%. यानी 37 की जगह 15% सरचार्ज, टैक्स रेट नहीं, पर काफी रियायत है फिर भी बहुत सरचार्ज। बड़ी। तो मैंने आपसे यही बोला कि जो बड़े निवेशक हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल कई बार 100 करोड़ होता है, 500 करोड़। वे स्टार्टअप्स है, व्हेन यू हैव सीन सो मेनी स्टार्टअप्स मेकिंग ह्यूज मनी, तो उसमें 37% सरचार्ज, टैक्स के ऊपर सरचार्ज, वो कैप कर दिया 15%। पर हमें जो उम्मीद थी सिक्योरिटीज में कि शायद एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हट जाए, वो नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ और मतलब उससे ज़्यादा हमें उम्मीद थी कि स्लैब्स बढ़ा दिए जाएंगे, एटीसी की डिडक्शन बढ़ा दी जाएगी, कुछ मेडिकल क्लेम के लिए आपका रिलीफ जो है डबल कर दिया जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। सो इंडिविजुअल्स के लिए, मीडियम सेगमेंट के लिए कुछ रियायत नहीं है। और जो टैक्स स्लैब हमारे थे रोहित, वो जस के तस हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं। पर अगर इतनी ग्रोथ जितनी आपको चाहिए और इतना केपेक्स जब आप लगा रहे हैं, तो वो पैसा आने कहां से वाला है? ये बड़ा सवाल है, कहां से आएगा पैसा? आपकी उतनी तो आमदनी है ही नहीं जितना आपका खर्चा, जैसे वो दैट ओल्ड सेइंग जैसे जाती है, बट रुपया उस हिसाब से आपका, तो फिर क्या डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है? क्या एसेट मोनेटाइजेशन से आ सकता है? देखिए, ये दो एरियाज है ऊपर, हालांकि इस बजट में कुछ खास मिला नहीं है, बट फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरुआत में ही बोल दिया था, जैसे हम लोगों ने कल भी इस पे बात की थी, कि शी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट कि एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट होगी। बात दूसरी बात, उन्होंने एक स्टील मेकर की भी बात की थी, जिसका डाइवेस्टमेंट के बारे में कल अनाउंसमेंट हुई थी, टाटा स्टील ने उसको भी खरीदा है। एंड तो इन दो चीजों को लेके हमें ऐसा लग रहा था कि जो नेशनल मॉनेटरी पाइपलाइन है उसके अंदर और ज्यादा एसेट्स आएंगे, और हमें ये भी लग रहा था कि और कोई बड़ी कंपनी का नाम आएगा। पर आप इसमें देखिए, उन्होंने LIC के बारे में क्लियरली बोला है कि मार्च तक के इसका भी IPO आ जाएगा। तो उसका असर क्या पड़ेगा? LIC का IPO अगर आता है, उसका आपको क्या असर दिखता है बाजार में? उसका असर ये है कि आपका फिस्कल डेफिसिट का जो रिवाइज टारगेट है वो 6.4 से 6.9 गया है। तो इसके अंदर यानी कि आपका जो बोरोइंग है मार्केट से, क्योंकि आप उतने तो कमाते नहीं है जितना आप खर्च रहे हैं, तो अब जो वो गैप को फिलअप करना है उसको, तो उतना आप बोरो कर रहे हैं मार्केट से। अब आप बोरो किए जा रहे हैं, तो इन अ वे फिस्कल डेफिसिट को कंटेन भी तो करना पड़ेगा। आप कर्जे में थोड़ी ना जी सकते हैं कि आज के लिए आप आने वाले कल के ऊपर आपका कर्जा लिए जा रहे हैं। आप कहेंगे लॉन्ग ओवर ड्यू है ये लॉन्ग ओवर ड्यू तो LIC वो भी है, BPCL का भी होना था। BPCL शायद तक अगले साल होना है, इसी वजह से उन्होंने शायद तक डाइवेस्टमेंट की और कोई बात नहीं की, क्योंकि अगर वो बात होती तो फिर उसमें BPCL भी पिछले साल की जो सूची है वही पेंडिंग चल रही है, वही इस साल शायद। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने INS को भी बोला है, और हमारी स्टोरीज भी हैं इसके ऊपर, कि आपने जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान बनाया है, आप इसको इम्प्लीमेंट ठीक से कीजिए। आपके पास सारे एसेट्स हैं उसके अंदर जो आने वाले FY 25 तक के रहेंगे, एंड उसी चीज को आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए पहले। और काफी बड़ा रेवेन्यू है एसेट मोनेटाइजेशन, 6 लाख करोड़ रुपए की बात है अगले 3-4-5 देखिए, पर आजकल में भी नहीं, आने पिछले काफी सालों में आपने नोटिस किया होगा कि बजट के अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं पूरे साल भर में। जैसे PLI की जितनी भी स्कीम्स थी वो बजट में थी नहीं, वो बजट के बाद ही आई हैं। तो क्या पता कि फ्यूचर में वो इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बात करें, जब थोड़ा सा पॉलिसी क्लैरिटी और आए इसके ऊपर। पर आप देखिए उन्होंने और किन किन चीजों पे बात की है। किसान ड्रोन पे उन्होंने बात की है, उन्होंने अराउंड मेरे हिसाब से 400 नई ट्रेनों के ऊपर बात की है, उन्होंने अर्बन मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात की है, EV बैटरी स्वैपिंग का एक पॉलिसी लाने पे बात की है, ईज ऑफ लिविंग 2.0 के ऊपर बात की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बात की है। एक नई पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो पहले से चल रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। फिर आप देखिए 5G के ऊपर बात की है। तो जहां जहां पे मेरे हिसाब से उनके पास भी एक पॉलिसी क्लैरिटी थी कि हम यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन्होंने वहां पे किया है। डाइवेस्टमेंट पे उन्होंने शायद तक पिछले साल कुछ ज्यादा ही बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी थी, तो इस साल मेरे हिसाब से उनको इतना ना इंटरेस्ट भी होगा कि वो पहले चाहेंगे कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, और उस सूची में 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी उल्लेख था 1 फरवरी 2021 को। तो देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट इस साल नए साल में कैसे जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो टैक्स स्लैब में तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ड्यू डेट की रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, और उसके बाद अब रजत अपडेटेड रिटर्न। सो अपडेटेड रिटर्न कुछ ऐसा नया प्रोविजन आ रहा है जिसमें इफ अ टैक्स पेयर फाइंड्स अ मिस्टेक हिमसेल्फ, तो वो कहते हैं कि एडजुडिकेशन प्रोसेस में, ढूंढने में, निकालने में, इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देन
many people going for appeal. So rather than to cut down it, आपको गलती मिली, आप गलती अपनी रिटर्न खुद रिवाइज कीजिए असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल के बाद। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च 22 की रिटर्न जो है 31 मार्च 23 प्लस 2 साल और, यानी कि 31 मार्च 25 तक आप खुद ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 3 साल हो गए, 1 साल तो है ही, 2 साल और, एक तरह से 3 साल हो गए। आप खुद टैक्स पे कीजिए, इंटरेस्ट पे कीजिए और अपडेट कर दीजिए। टैक्स और इंटरेस्ट है या कुछ पेनल्टी भी हो सकती है? पेनल्टी, सो दैट इज पेनल्टी, सो देयर विल बी नो पेनल्टी। यस, अच्छा, इफ देयर इज अ पेनल्टी देन देयर इज नो बेनिफिट। पर फिर ये इनकरेज तो नहीं कर रहे आप कि कई लोग बिलेटेड रिटर्न के बाद भी अब रेटेड रिटर्न ही भरें? तो बहुत लोग ऐसे होंगे, टैक्स नहीं होगा तो वो बाद में डिस्क्लोज करेंगे और अपडेटेड रिटर्न भर देंगे। तो यू नो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये चल पड़ेगी स्कीम तो उसके बाद आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे 1 साल के बाद कि अच्छा इंटरेस्ट रेट सेम है तो ऐसा करो इंटरेस्ट रेट 24% कर लो। So that is why we see lot of amendments every year ना, we keep on improving। जी बिल्कुल। पीएलआई का आपने जिक्र किया था और पिछले साल जब बजट आया और आपने कहा उसके बाद कई मिनी बजट आते हैं, तो अभी हमने देखा है 13 सेक्टर उसमें थे और आज वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को खासतौर पे बढ़ावा मिला है। तो आज क्या उसका फिर कुछ दायरा बढ़ा है पीएलआई का? मेरे हिसाब से उन्होंने पीएलआई को एज अ स्प्रिंग बोर्ड यूज किया है आगे बात करने के लिए वो सारे सेक्टर्स के ऊपर जिनके ऊपर हमने अभी बात की कि जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है डेटा सेंटर्स को, और जहाँ पे आपका जो बैटरी ईवी की जो चार्जिंग फैसिलिटीज को जो लोग बनाते हैं उनको इंडस्ट्रियल स्टेटस देने की बात की है उन्होंने। वहीं पे ही पीएम गति शक्ति के अंदर बहुत सारे और इंडस्ट्रीज की भी बात की है। एमएसएमईज के लिए जो इन्होंने ये लोन का प्रोविजन रखा था उसको बढ़ाने की बात की है। अच्छा। तो इस बार पीएलआई के ऊपर एज सच मेरे साथ सोलर पे आया था शायद तक कि सोलर पे उन्होंने सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर कुछ बात की है, बट एज सच इतना विस्तार से उन्होंने कुछ ज्यादा दिया नहीं है। शायद तक आने वाले वक्त में वो और ज्यादा इसके ऊपर सेक्टर्स के ऊपर वो बात करें। बात मोटी मोटी बात जितनी दिख रही है वो ये है कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, आखिरी में एक एक्साइज का भी उन्होंने जिक्र किया है कि अनब्लेंडेड फ्यूल जिसमें एथेनॉल शायद तक नहीं मिला होगा उसके ऊपर 2% की एक्स्ट्रा एक्साइज आपको 1 अक्टूबर 2022 से देनी पड़ेगी। इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। इनडायरेक्ट टैक्स पे है क्योंकि हमने देखा है 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया और इस साल जीएसटी 5 साल पूरे कर लेगा, तो जीएसटी का सारे प्रावधान तो अब जीएसटी काउंसिल देखते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बड़ी घोषणा हुई है आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं था कि, बट ऐसा लग रहा है कि कस्टम ड्यूटीज जो होंगी वो कुछ रिड्यूस करी जाएंगी इन अकॉर्डेंस विद द पीएलआई स्कीम्स और मोबिलिटी केमिकल्स जो हमारे वो 13 सेक्टर है उनको देखते हुए फाइन प्रिंट में और नोटिफिकेशंस में ऐसा लगता है कि कुछ इंपोर्ट के ऊपर जो एग्जम्पशंस थी वो फेज आउट करी जाएंगी, जो रॉ मटेरियल थे उनकी कुछ ड्यूटीज हो सकती, बट स्पीच में ऐसा कुछ कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन होगी। लेकिन हमने देखा वित्त मंत्री की स्पीच में सस्टेनेबिलिटी वर्ड आया, उन्होंने ग्रीन पुश की बात की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और रोहित इस बार जो रिपब्लिक डे का इनविटेशन कार्ड था और बीटिंग रिट्रीट का भी वो इको फ्रेंडली कार्ड था, उसमें आंवला अश्वगंधा के बीज थे कि आप एक बार हो आए समारोह वापस आके उसे गमले में या कहीं सॉइल में लगा दें तो ये आंवला अश्वगंधा के पौधे हो जाएंगे। आपको लगता है ये जो ग्रीन पुश है, सस्टेनेबिलिटी, ये एक बहुत जरूर अब एक अहम फैक्टर बन गया है बिजनेसेस में? देखिए ईवी को लेके जो जितनी बात हो रही है, क्योंकि ईवी एक मेन स्टे पॉलिसी है उस ग्रीन पुश को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, एंड ईवी के ऊपर आज इन्होंने क्या बात की है कि ईवी स्वैपिंग की जो एक पॉलिसी है वो ये लेके आएंगे, क्योंकि ईवी में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो चार्जिंग की आती है। तो पहले आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, इतना बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं जितने ज्यादा आपके पेट्रोल पंप का जो नेटवर्क है वहीं पे ही आप अगर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने आज बैठेंगे तो पता नहीं 10 या 20 साल तक आपको लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो बैटरी स्वैपिंग एक किस्म का एक शॉर्टकट है इसके लिए, जो मास ट्रांसपोर्टेशन में या एटलीस्ट आपके ऑटो रिक्शा तक में आपके उसमें यूज होता है। तो दैट वाज रिक्वायर्ड, तो उसके ऊपर उन्होंने जरूर बात की है। हालांकि इंडिया ने भी एक स्पेसिफिक टारगेट रखा है नेट एमिशंस को अपने जीरो ले जाने का, और ये उसी की दिशा में वो लोग काम करेंगे। आपका ग्रीन पुश की जहां तक के बात है, तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर भी आज बात हुई है या जितना भी वो पॉलिसी के हिसाब से उसको प्रमोट किया जा सकता था वहां पे उन्होंने बोला है कि हम इन सब चीज़ों को करेंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो
जितना फ्यूल जो अनब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर मैंने आपको एक्साइज के बारे में एक उसका भी एग्जांपल दिया था, तो उन सबको मिला के ऑब्वियसली जो ग्रीन एलिमेंट था ये पहले के बजट्स में नहीं होता था, ये इस बार के बजट, पिछली बार के बजट में था। तो अब आप ये दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ फीचर जो आपको हर आने वाले बजट में भी मिलेगा। दे कम आउट विद दीज डिस्क्लोजर्स कि जहां पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारा क्या होगा, सोसाइटी के ऊपर हमारा इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नेंस पर हमारा इम्पैक्ट क्या होगा। तो इन चीजों इज द मेन यू नो कंट्री, तो ये इस चीज को मिस आउट नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और बजट जब बनता है तो यकीनन रेवेन्यू बजट पे सबसे पहले ध्यान जाता है कि आखिरकार सरकार मुहैया कहां से कराएगी राजस्व, और वो टैक्स कलेक्शन से ही आता है। हमने देखा पिछले साल 15-16 लाख करोड़ राजस्व था, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर। इस साल टैक्स कलेक्शंस दोनों में बढ़े हैं। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो था वो भी आई सपोज काफी अच्छे दर पे बढ़ा है। अच्छा, मार्केट्स 60,000 टच कर रही है, अप डाउन चल रही है, बट आई फील यू नो इन्होंने बताया 1.5 लाख करोड़ जनवरी में तो रिकॉर्ड हो गया। यस, 1.4 लाख तक का हाईएस्ट है। और जीएसटी के अंदर 14% रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉमिस करी गई है काउंसिल के द्वारा सारी स्टेट्स को। तो आई थिंक वी आर ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जहाँ पे सब नंबर्स बढ़ते रहेंगे आगे। आई फील सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स काफ़ी अच्छा कलेक्शन आएगा गोइंग फॉरवर्ड। और डायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि कॉर्पोरेट्स को राहत इतनी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट लिंक आ रही है, मार्केट्स इंक्रीज कर रही है, तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो हमारा टैक्सेशन है वो भी बढ़ेगा। एसटीटी को डायरेक्ट टैक्स में ही काउंट करते हैं? एसटीटी को डायरेक्ट टैक्स में। तो जो राजस्व में हमने देखा टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स में जैसे डिविडेंड आता है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात, क्या इनोवेटिव फाइनेंसिंग हो सकती है? जो 5G की बात की है, क्या वो भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा फिर? वो सबसे बड़ा सोर्स मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए होने वाला है। बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट होने वाला है, 2 बैंक के नहीं शायद तक के इस साल 31 मार्च तक के वो रहेगा। आपका पर एक और जो चीज है वो ये है कि इतनी जो लेवरेज जो दी जा रही है सेक्टर को, इतनी ज्यादा जो टैक्स कंसेशन दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो प्राइवेट कैपिटल है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, वापस आए, एंड इसको ट्रिगर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि देखा गया है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है दैट इज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस देश की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद एक है। एंड सब लोग यही चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ये शायद तक के पैंडेमिक का दिस माइट बी द एंड ऑफ पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के बाद अब आगे क्या? अब पूरा देश तो आप सिर्फ ये सरकारी पैसे पे या इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने में नहीं चाहता, आपको कहीं ना कहीं पे आपको वो ट्रिगरिंग फैक्टर चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए वापस। तो शायद कि इसी वजह से उन्होंने इतनी ज्यादा एग्जामिनेशन और इतने ज्यादा वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे वो गेन करने के लिए। 5G जहां तक के बात हुई है तो वर्ल्ड ने बहुत सारे देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, उन लोगों ने 5G अपने वहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बहाल किया। इंडिया में भी वो होने की उम्मीद है। भी जितनी भी कंपनीज हैं, RGO एंड दूसरी वाली, they claim that they already have actually these kind of technologies, in-house technologies, and इसकी ट्रायल एंड टेस्टिंग भी चली है, एयरटेल ने भी की है कहीं कुछ शहरों में। तो आने वाले वक्त में 5G एंड इन सब से ऑब्वियसली रेवेन्यू गेन हो रही है। अब आपने एक और बात थोड़ी देर पहले की कि बिलेटेड और इन सब के जो रिटर्न फाइलिंग्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस वक्त कोई भी रेवेन्यू के स्ट्रीम को छोड़ने नहीं वाली है। उनको जहां पे भी मौका मिलेगा दे हैव टू गेन। अपने एडमिन कॉस्ट कम करते हुए कि आप खुद ही आ जाइए, वॉलंटरी खुद ही आ जाइए। एंड इनफैक्ट टैक्सेशन में भी जो रिफॉर्म्स की जो हम इतनी बार बात करते हैं कि एक इजी टैक्सेशन प्रोसेस होना चाहिए, ये उसकी तरफ भी एक इनके बढ़ते कदम है। राइट। तो पिछले साल जो एक मोटे तौर पे आंकड़े थे कि जी 35 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट, 20 लाख करोड़ का आपका राजस्व और 15 लाख करोड़ की बोरोइंग। अब आने वाले फिस्कल की क्या तस्वीर है फिर? जीएसटी मुझे लगता है कि एक अच्छा, मतलब नंबर्स आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट, बट मुझे लगता है जीएसटी एक बहुत बड़ा एक पूल होगा जो इकट्ठा करेगा। और नेक्स्ट चैलेंज जीएसटी के अंदर ये आएगा कि सेस के बारे में क्या करती है सरकार, क्योंकि सेस जब जीएसटी के अंदर आया तो केवल 5 साल के लिए आया था, जो कि जुलाई 2022 में खत्म हो जाएंगे वो 5 साल।
नाउ अब आई डोंट सी एनीथिंग इन बजट की वेदर दे वांट टू एक्सटेंड इट और नॉट, क्योंकि सेस जो है आपकी बहुत सारी चीज़ों पे, गाड़ियों पे, एसीज पे, बहुत सारी चीज़ों पे लगता है, तो उसका कलेक्शन अगर कम हो जाएगा तो फिर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने ही रेवेन्यू से देना पड़ेगा। अच्छा, तो गोइंग फॉरवर्ड जीएसटी वुड बी बिग कंपोनेंट, बट यस सेस नीड्स टू बी डिसाइडेड हाउ विल सेस वर्क। तो ये जो जीएसटी में सेस का कंपोनेंट जुलाई 2017 से आया था 5 साल के लिए, वो जुलाई 2022 में संपन्न हो जाएगा। as per the promises made Right. by the government when GST was there, सेस की जो फिगर थी केवल 5 साल के लिए ही लेजिस्लेशन था। ओके, बट अभी हमें नहीं लग रहा है कि एकदम से जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लेजिस्लेशन हटा दोगे तो गाड़ियों के ऊपर कईयों में 15% सेस है, 30% सेस है, तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो अगर आज मान लो उसकी बात नहीं हुई, क्या आगे जीएसटी काउंसिल में फिर बात हो सकती है? जीएसटी काउंसिल में बात होनी चाहिए उसको, जैसे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग है, Yes. वो प्रोविजन भी पहले 2 साल के लिए आया था, फिर 4 के लिए आया, 5 के लिए आ गया। तो ये सारे चेंजेस काउंसिल खुद ही कर रही है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, वहां कुछ बदलाव हुआ है? पर्सनल इनकम टैक्स में तो हमने देखा ज्यादा बदलाव नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स में सिर्फ 2 जगह सरचार्ज रिड्यूस हो गया है, और स्टार्टअप्स के लिए और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं उनके लिए 1-1 साल का इनकॉर्पोरेशन और बढ़ा दिया गया है। अच्छा। सो पहले अगर आप स्टार्टअप थे आपको 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन थी। अगर आप मार्च 22 तक यू स्टार्ट योर इनकॉर्पोरेशन, अभी वो एक्सटेंड करके मार्च 23 तक हो गया है। ओके ओके, सो ओवरऑल गुड बजट, very good budget, best budget? Overall good budget for corporates. I see कि now it is time for corporates to invest. Private investment आना चाहिए, and they should create jobs, they should create employment. Okay. And next year probably slabs में कुछ रियायत होनी चाहिए, ATC में रियायत होनी। Final words, अगले फिस्कल ईयर की क्या तस्वीर दिखती है? तस्वीर ये है कि जैसे आपने पूछा, केपेक्स जो हमें पता है कि 7.5 लाख करोड़ तक का है, रेवेन्यू के हिसाब से एस्टिमेटेड इज अराउंड 22 लाख करोड़, एंड इनके खर्चे शायद तक के अराउंड 39 लाख करोड़ के आसपास। 42 that we were thinking will happen. नहीं, उतना नहीं है। एंड इनका जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो टारगेट है वो भी इस साल के ही टारगेट जितना, यानी कि इस साल जो अभी जो रिवाइज हुआ है 6.9, उससे जो पहले वाला था 6.4, उतने पे ही है। 6.4%। इट्स एट 6.4%। तो ये जो गैप आया है 22 एंड 39 के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी द फिस्कल डेफिसिट फॉर दिस ईयर, बोरोइंग्स फॉर दिस ईयर। 6.4 अगर आप देखें तो इन्होंने काफी लूज अपना एक वो छोड़ा हुआ है, क्या नाम है, टारगेट FY25 तक के इन्होंने बहुत लूज छोड़ा हुआ है, ताकि ये ग्रोथ को सपोर्ट कर। मेरे हिसाब से फिस्कल पुश should be the main word for this particular budget कि इन्होंने फिस्कल पुश दिया। पर एक जो मेन जो मुद्दा एक जो हम लोग ने भी मिस कर दिया वो ये भी है कि जैसे जैसे यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा ग्लोबली, इंडिया को भी वो फॉलो सूट करना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल एंड हाउसिंग सेक्टर्स है जिन्होंने ये जो 10 साल के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी, इसका काफी फायदा उठाया है लोगों ने। जब वो रेट्स बढ़ेंगे तब क्या होगा, तो जब उस चीज का भी जो नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे वो ये केपेक्स खत्म करेगा। मेरे हिसाब से इसी वजह से भी ये केपेक्स को इन्होंने 35% इस बार बढ़ाया है। बट इट्स सच अ बैलेंसिंग एक्ट कि इन्होंने वही 6.4 फिस्कल डेफिसिट भी रखा है, केपेक्स भी बढ़ाया है, अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी इन्होंने बताया कि जीएसटी की रोबस्ट कलेक्शंस चल रही हैं अभी भी, और हम थर्ड वेव में भी हैं। तो थर्ड वेव से नेक्स्ट वेव तक के का ये बजट है, लाइक 100 इयर्स का जो इनका, लाइक 25 आगे जब भारत 100 साल की आज़ादी का अपना वो बना रहा होगा, तो जो उनकी जो जिसकी तस्वीर के जो फर्स्ट वो बेसिकली दर्शाता है ये वाला बजट। थैंक यू वेरी मच रोहित वैद, थैंक यू वेरी मच सीए रजत मोहन आकर आम बजट पे चर्चा करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए आम बजट पर हम और बातचीत करते रहेंगे ताकि जो इसकी बारीकी है, इसके की टेक अवेज हैं, उसको हम सब घर परिवार समझ सकें। आइए जानते हैं कि और क्या खास बात रही आम बजट 2022-23 की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश की करोड़ों उम्मीदों का बजट पेश कर दिया। संसद भवन में सुबह 11 बजे उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल बजट पढ़ते हुए अपने भाषण का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको बताते हैं इस बजट की खास बातें। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशील परियोजनाओं को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है।
किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 60 लाख नई नौकरियां, गरीबों को 80 लाख घर। भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान। टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है ये। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी। देश कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। LIC के जल्द IPO आने की उम्मीद। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश की करोड़ों उम्मीदों का बजट पेश कर दिया। संसद भवन में सुबह 11 बजे उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल बजट पढ़ते हुए अपने भाषण का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको बता दें इस बजट की खास बातें। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशील परियोजनाओं को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 60 लाख नई नौकरियां, गरीबों को 80 लाख घर। भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान। टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है ये। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी। देश कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। LIC के जल्द IPO आने की उम्मीद। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश की करोड़ों उम्मीदों का बजट पेश कर दिया। संसद भवन में सुबह 11 बजे उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल बजट पढ़ते हुए अपने भाषण का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको बता दें इस बजट की खास बातें। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशील परियोजनाओं को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 60 लाख नई नौकरियां, गरीबों को 80 लाख घर। भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान। टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है ये। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश की करोड़ों उम्मीदों का बजट पेश कर दिया। संसद भवन में सुबह 11 बजे उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल बजट पढ़ते हुए अपने भाषण का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको बताते हैं इस बजट की खास बातें। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशील परियोजनाओं को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 60 लाख नई नौकरियां, गरीबों को 80 लाख घर। भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान। टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है ये। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल 5G spectrum. I don't know. We'll have to talk and then we'll hear, na? At this moment, I can't say. Yeah. Good afternoon. Welcome back here with IANS TV, and we are still dissecting the budget. With us, Monica Arora, partner Deloitte India. Monica ji, welcome. Thanks for being here with us. So let me first ask you about your key takeaways from an indirect tax point of view, because I know that you follow this bit very closely. Yes, thanks. I think from an indirect tax perspective, I would say that the budget is pretty pragmatic and is continuing with the reform agenda that was set in course in the previous 2 budgets itself. No big bang announcements. However, a lot of expectations of the industry and the experts from the budget with this year have been met. Most of the announcements have continued with the primary agenda of Atmanirbhar Bharat. The customs duty exemption rationalization, which was again expected, given the fact that in last budget also 80 exemptions were withdrawn, and this time the FM has announced that about 350 exemptions are likely to be phased out. Was expected. However, we'll have to see the fine details of whether the withdrawal of exemptions will have what sort of impact on various industries and the key players. Simplification of tax, again, another agenda which was expected. The changes in the exemptions and the suggestion of the FM that most of the exemptions will be brought into the tariff itself now will again give a lot of relief to the taxpayers while classifying goods, because the tariff itself will provide a concessional rate, and one would not need to go into various exemption notifications to identify what sort of rate is applicable on the import of particular products. One surprise element, I would say, apart from what has been announced from an indirect tax perspective, is the phasing out of the various exemptions and concessions on capital goods and the phasing out of the project import scheme. These schemes and these exemptions have been around for numerous years, and we'll have to see how these impact the industry per se, because the project import scheme provides concessions to the industrial sector in terms of railways, power, generation of electricity, distribution, etc. So while the thrust of withdrawing these exemptions is on giving a boost to the domestic manufacturing industry, however, we'll still have to see how the withdrawal of these impacts all these sectors which are the backbone for the economy. Okay. What about announcements around GST? This is a budget. We have a GST council. However, did you pick up any signals from her speech that suggest that they're serious about modernizing the architecture of the GST system as it stands? Because that has been a request from industry. Let's make it easier. Let's make it easier.
Right. In fact, a lot of actions have been taken on the GST front in the last 4 to 5 years, and digitization of the entire compliance processes under GST has one big achievement for this government since the implementation of GST. However, from the perspective of GST, I don't see any announcements by the FM which give any sort of directional clarity on the further improvements that the taxpayers seek from the GST. And one of those is consolidation of the tax rate slabs. As you know, we have multiple slabs in GST, and one of the demands of the industry has been to consolidate the slabs and make the structure a little bit simpler. So this was one aspect which people were hoping that the FM will make some announcement either on the roadmap or on the timelines to do this consolidation, although there is already a group of ministers which is evaluating this rationalization of the rate structure as well as the consolidation of slabs. But there was an expectation that the FM will highlight the roadmap or the timelines, but that's something which has been amiss in the budget. And the other thing from a GST perspective was, to bring about the statutory changes which have already been decided upon or recommended by the GST Council. So even those were not mentioned by the FM in the speech, but when we read the fine print, maybe there is some indication to all those statutory changes which need to be brought about to bring into effect the announcements by the GST Council in the earlier meetings that have already taken place. I'm going to probe this point a little further. In your experience, when they do not make references to certain things, is it fair to assume that they haven't found it important enough to reference them in a speech, and therefore they're either not there or they're not significant? So I take a very different take on this. If you see the speech of the FM this year, it's pretty shorter than what it was, in one of the 2 years that he's already, given announced the budget. So I would still like to place some confidence that we will find some things in the fine print or the finance bill. However, to some extent, if they've not touched upon, even the broad level intentions that they have from a reform perspective under GST, is a bit disappointing. But let's wait and watch and see the details to be sure about this. So based on what you heard from her over 90 minutes, what is your own assessment of their assumptions on GST tax collections? So everything is based on assumptions at this point. What's your sense of how optimistic they are? And is that I think their optimism is a little justified, because if you look at the revenue collections from GST, they have been pretty over 1 lakh crore over the past 8-10 months, and the FM also announced that the January collections have crossed the highest levels that GST collections have achieved so far. So I think the optimism is a testimony of the economic recovery which has happened post the pandemic, and some of the administrative measures and the digital steps that the government has taken to improve the compliances under GST. So my take would be the optimism is justified, not that misplaced. Okay, good. One question on the big picture. So for an international investor, what do they take away from this budget? It's growth oriented, it's forward looking. Does it do enough to instill confidence in international? So I would say that the budget definitely gives confidence to the international investor on two fronts. One, that the government is definitely focused on simplification of the tax regime. The various measures which have been announced by the FM in the speech today, whether it is integration of the portals for state and center, whether it is bringing about ease in investment, or anything which is in relation to compliance, gives a comfort to the international investor that the government is aiming to simplify the tax laws per se.
Second, the ease of doing business again is a very top agenda on the minds of the government. Third, the investment is also becoming attractive for international investor from the perspective that the government is bringing out schemes like the production linked incentive schemes, which are again sources of incentives to anybody who's able to bring in investment into India and set up manufacturing operations in various key sectors. So I think maybe there are no big bang announcements, but the government has definitely announced various steps which go to further their agenda of attracting FDI into India. Monica Arora, partner Deloitte India, I'm going to now turn to you and ask you a question as an individual, as a taxpayer, as a homeowner, as a parent. What does this budget do to your own tax obligation, and how do you feel about no significant changes in tax slabs? Oh, I would say very disappointed, because there was a lot of expectation for individuals per se and salaried class per se, who've been seeing a lot of changes in the way they operate, the way they work, and their expenses have gone up because of operation from home. So as a common citizen, I was definitely expecting that the government will provide some further deductions towards these expenses, or even enhance the standard deduction which is available to salaried class. But nothing has been announced there, and I think this will be a larger point of disappointment for a large category of people who are either into profession or are salaried employees. Why do you think they've held off? Yes, there are elections around the corner. So in fact, there is an incentive to be more generous in what they put in people's hands. And yet they've not given into that temptation. So it's a bold move. Where do you think this is coming from? I think, the government is trying to be a little more sensible with the money that they place in the hands of the consumer. And I think they're focusing more on investing through the public investment means, rather than placing more money in the hands of the consumer. There must be some rationale behind this. As a consumer, I may not be able to pinpoint that, but I believe the government has done enough in terms of giving concessions, incentives, both to the industry as well as the individual taxpayers in the past few years. And this time around, in spite of the fact that there are elections coming up in 4 major states as well as a union territory, in the next couple of months, and we have the national elections in 2024 again, the government has decided not to provide these kind of incentives, which are mostly populist measures. So seems like there is an thought process behind this, and I think only time can tell whether this was something which was beneficial for the government or not. Monica, thanks very much for your time, for your expert comments. Appreciate it very much. Thanks again. Thank you. Thank you so much. So yes, no big bang announcements, but policy continuity, policy stability, trying to give an impetus to growth, several announcements that would go down well with corporates, no significant changes in the tax slabs for individuals. However, the focus is forward-looking, and there's a lot of emphasis on infrastructure, especially digital infrastructure and green business sustainability. There is an expected increase in CapEx, capital expenditure, the expenditure of the government that is on creating physical assets that are important for any country to develop. So up over 30% increase in the budgeted outlays on capital expenditure. We've got Arindam Guha with us. Arindam Guha, welcome. You're partner with Deloitte India. Arindam, your first take on what you saw in the infrastructure space. Arindam, are you able to hear me? All right, we're going to get that fixed. Just a quick recap of what we've heard from Nirmala Sitharaman in about a while ago. A big push on digital,
India is getting its digital currency, clarification to an extent on the policy framework for digital assets, 30% tax on digital assets. I'm going to try and connect with Arindam again. Arindam, can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? Brilliant. Yes, I can hear you. Thanks for joining us. Your first reaction on what you heard on the infrastructure side of things from Nirmala Sitharaman. No, I think this was pretty much expected, but it's very encouraging that the government has chosen to increase. We were expecting them to at least maintain, but they have chosen to increase their infrastructure spending because that really is very critical for the GDP and the economy to continue on its growth path. Because as all of us know, infrastructure investments have a sizable multiplier effect on GDP, which is above 2, as various studies have shown. So that's one definitely encouraging sign. And I think the other highlight of the budget is it's always been there, but the way private financing and mechanism of financing of this infrastructure spending has been called out. I think that was always the need of the day. So I'm going to pick up these 2 points first before we proceed. So what's the increased outlay that they have projected or promised? And were you expecting this much? Is it more than what you'd expected? I would say it is more than what I expected, because it's a 30% increase over last year. I think that's what came out in the highlights of the budget document as well. And the overall investments, if you look at, include the grants and other modes of funding of infrastructure projects, the central government funding is likely to be around 10 lakh crores. Now, if I were to draw your attention to the NIP, the National Infrastructure Pipeline, that more or less tantamounts to around 22 lakh crores of infrastructure investments every year. Now, if the central government through the budget, it spends around 10 lakh crores, that should be a good enough corpus to mobilize the states as well as the private sector to contribute the balance. And was this the financing model that you were referring to earlier? That's right. That's right. It's more or less in line with the National Infrastructure Pipeline. And of course, the key question, which I think we will see in the days to come, which needs to be answered, is whether private investment steps up. So let me ask you that. Did you hear anything in the budget that would get a big investor super excited about saying, I'm coming in now? Well, you see, I think we have to look beyond the budget, because the tax provisions are being interpreted as we speak. Mm-hmm. But I think a number of measures have already been taken, whether you look at asset monetization, whether you look at NABFID, which is the Development Finance Institution, Mm-hmm. which the government has set up. Mm-hmm. Now, in all these cases, what's happening is asset monetization, for example, gives a lot of comfort to private investors, Mm-hmm. because as part of that, operating assets are getting financed by private sector, Mm-hmm. where the uncertainty around cash flows is much lower. Mm-hmm. If we look at the Development Finance Institution, NABFID, there the government is contributing to the initial corpus in the form of a part of the equity capital, Mm-hmm. which will then be leveraged to bring in private equity investors as well as raise debt from the market. Mm-hmm. So the principle is very simple. The government ends up funding the risk capital, and that risk capital is then mobilized or leveraged to bring in private investors. Now, the other missing piece are the state governments, because we also have to remember that about 30% of the NIP is under the administrative jurisdiction of the states. Sectors like irrigation, urban infrastructure, health, education. This is where the state level projects will have to come up. So if we just take a leaf out of today's budget, we will find that the incentivization to states has also been stepped up significantly. The central scheme on assistance to state governments in the form of long-term zero interest loans or concessional interest loans, the budgetary outlay has gone up from 20,000 crores to 1 lakh crores, 1 lakh crores. That's clearly the other missing piece, because I'm sure that all of us are hoping that that will be sufficient incentive
for the state governments to contribute to the infrastructure building. Actually, that's a really important point, and I'm glad it came up because it's worth remembering that we're a federal setup, so we can have any number of announcements by the union government. Ultimately, a lot depends on how quickly the states run with this and how much they're on the same page as with the center. And so many policies have actually stumbled their way through this morass. Exactly. Isn't it? Exactly. And I think, we have seen similar announcements around ease of doing business and the software reforms as well, where the states have been motivated through concessional financing to undertake reforms in urban planning, around ease of doing business. So I think this is in the true spirit, cooperative federalism as we speak about. What on asset monetization, would you what's the number that you expect in terms of them being able to deliver on the targets? Because that's always something to look at. I mean, it's okay to announce a target, but based on how they've done so far. I think, maybe something around 1.5 lakh crores in 22-23 should be achievable. Because you see, if you look at asset monetization closely, some of the sectors have picked up. For example, roads, renewable energy, even telecom, and telecom towers specifically have picked up. But the sectors which need significant focus are railways. I think there, just like NHAI came up with its InvIT, there are similar discussions happening. And with the, I think commencement of the entire freight corridors, all the freight corridors, that will be a good asset to be monetized. But I think certain issues around regulations to give comfort to private investors need to be addressed so that cash flow certainty steps up. So certain sectors need to be focused on. Urban infrastructure is the other area where again the state governments would have a role in ensuring predictability of cash flows. But I think if these get addressed in a timely manner, there should be significant interest from financiers. So let's look at the big picture in them. How much does infrastructure need to grow by if you're to become a $1 trillion economy, and how realistic is that ambition, given what's happened over the last 3 years? No, I think you see the main issue is if you look at the 2019 and 20 spending on infrastructure, the spending was around 10 lakh crores. Okay. And as per the National Infrastructure Pipeline, the target spending between 20 and 25 is 22 lakh crores per annum, of which the central government, its share would be around maybe 40% of that. So that's what we see coming in through the central government budget. Now, the other two missing pieces, as I was pointing out, are the state governments, which are supposed to contribute almost an equivalent amount. And the remaining 20 to 25% is supposed to come from private sources. Now, those are the two, pieces which need to get addressed. But I think, go ahead. but I think we are seeing some subtle changes in the approach. One is, leveraging technology to make project implementation more predictable. Gati Shakti is a simple example because all we are talking about is a technology-enabled platform which is integrated with GIS to identify priority projects across the country, ensuring timely implementation, resolution of bottlenecks, so that projects get implemented on time. Because asset monetization is one a different cup of tea because assets are already in operation. But when we look at conventional public-private partnerships, project-related uncertainties, are the issue to be addressed. So I think we are seeing all-around action, a comprehensive game plan, which hopefully will fall in place. So here's something that I want to draw your attention to, what we didn't hear: divestment. Yeah. So what do you read into that loud silence? No, I think, probably one of the reasons for that is rather than, casting something in stone, like a specific figure for divestment. The government didn't want to do that this time, but I'm sure it will find a place in the detailed budget documents. Maybe it was not called out in the speech, but, after Air India, and what we do know is that there's a fairly strong pipeline of assets
or companies which have been identified for divestment. And let's also not forget that asset monetization, divestment are two of the options. The government also separately is looking at surplus land, which they identify as non-core assets, which are likely to be monetized. So there are multiple options in place in terms of mobilization of resources by the government. Of course, certain areas which haven't been called out in particular is let's say something like property tax, for example, where the percentage of property tax for India as percentage of GDP is much below that of other countries. So that's an opportunity. Of course, politically sensitive, but I'm sure the deftness with which other issues are being addressed, even that will be addressed in due course. So obviously, it's pretty clear that 21-22 target for divestment has been missed by a huge mark. That's right. So do you think it would have been fair for us to have got an explanation on what happened? Like the fact that we didn't actually visit that at all, is that something that an international investor would have liked to heard about, or an Indian investor would have liked to hear about? I think the investor community typically would look at the software reforms which are getting implemented rather than a specific divestment transaction which did not happen. Right. And there has been a lot of movement on that. In fact, again, as I was reading through the highlights of the budget, I think the software reforms have been specifically called out in a separate sort of subsection within the budget. What do you mean by the software reforms? Something like EODB 2.0. We are talking about various types of, I think there was a reference to state governments being incentivized to undertake certain reforms. So those have already started happening, and I'm sure they will pick up impetus, because at the end of the day, the moment investments start getting grounded, the PLI schemes, for example, they have really, I think, made a significant difference on the ground. So investors, as a community, investors typically don't look at individual transactions. They look at the overall certainty of policy making and how the government, federal government or the central government, is able to carry the states along with it. I think that's what really matters. And whether the policies are getting reversed, or are they looking to be predictable and cast in stone? I think on that in particular, there have been quite a few positive developments. That's fantastic. I think I'm going to ask you one final question on the big picture again, which is that in terms of the fiscal deficit target, in terms of capex that they've committed to, and in terms of how they see themselves steering the economy out of a pandemic and creating a roadmap for the future. Are you seeing a vision for India? I am, and I'll talk about the 3-4 themes which I read into, as I go through this year's budget. In fact, it's a sort of a continuum which we have been seeing over the last 3-4 years. And the continuum, I think the themes are 3 or 4 in number. One is maintaining or increasing government capital expenditure in the form of infrastructure, so that crowding in of private investments happen. That's the first theme. Second is using technology, not only to monitor implementation of projects so that they happen on time, not only to ease the regulatory environment, but also to enhance the reach to the population in sectors like health and education. So digital platforms are another very, very important theme, which I'm sure figure as part of the blueprint. The third aspect is incentivizing private investment. I think that's what we are seeing through a combination of tax as well as non-tax measures. And finally, involvement of the states so that they become partners. I think today again there was a reference to special economic zones, how a new model is being conceptualized so that state governments also become equal partners. Because many of the projects which have been thus far implemented, for example, the freight corridors of the railways, that's where the state governments do not have a stake or are not shareholders. So I think even that is getting addressed. So these 4 themes I see as clearly emerging as some of the enablers to achieve the economic goals. Arindam Guha, thanks very much. Partner Deloitte giving us his take on the big picture as well as specifics around the infrastructure sector. Thanks very much, Arindam. Thank you so much. Bye-bye.
So, good, as expected, gives confidence. All this talk about policy continuity, stability, and increased capital expenditure. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश की करोड़ों उम्मीदों का बजट पेश कर दिया। संसद भवन में सुबह 11 बजे उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल बजट पढ़ते हुए अपने भाषण का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको बता दें इस बजट की खास बातें। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशील परियोजनाओं को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 60 लाख नई नौकरियां, गरीबों को 80 लाख घर। भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान। टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है ये। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी। देश कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। एलआईसी के जल्द आईपीओ आने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश की करोड़ों उम्मीदों का बजट पेश कर दिया। संसद भवन में सुबह 11 बजे उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल बजट पढ़ते हुए अपने भाषण का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको बता दें इस बजट की खास बातें। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशील परियोजनाओं को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर Well, I think it's a very well-balanced budget, given the situation that the whole world and especially our country is facing because of the pandemic for the past 3 years. I think despite the ill effects of the pandemic, still the way the budget's been presented, it's a very well balanced and a strong budget. But opposition says that nothing has been done for the creating unemployment, creating job opportunity for the unemployed. Well, the opposition were anticipating that it's going to be a very election-oriented budget because there are elections happening in 5 states of the country. So if there were a lot of relaxations if they were given, then they would have said that, it's for the vote bank politics for the election that this budget has been delivered. But having said that, I think it's an out-and-out well-balanced budget, taking care of the priorities of the country and taking care of the weaker section and the young entrepreneurs of the country. I think it's a very well balanced budget. Once again, corporate sector has been given lots of relaxation to them, financial relaxation to them. How do you see? I think it's an important step for the Atmanirbhar Bharat, and whatever budget and the announcements that have been made in the budget, I think it's been made keeping Atmanirbhar Bharat in mind. This budget is a pro-rich budget and a pro-corporate budget. Right. This budget is against the farmers, against the poor people of India and the youth of India. Their joblessness, there is no answer for the joblessness. There is no job creating programs announced. The government still favors the corporates. Okay. And so many things have been, lots of concession have been given to corporate sector. Instead of the budget paper does not speak about the farmers, unemployment, etc. How do you see to it? This government works for the corporate. हम दो हमारा दो का सरकार है ये, और this government's only nature is that to work for those people who pay them to win their elections. Due to their complete focus is on the corporate welfare only.
due to the COVID pandemic kind of thing, lots of jobs have been gone away. So regarding the creating job, etc., there is no clear-cut roadmap for the government as opposition say. How do you react to this? The government doesn't care about job creation. They only believe that the big numbers, 2 lakh crores, 5 lakh crores, like that number is enough, they think. Therefore, their only worry is about the numbers, not about the jobs. My last question, 30% tax has been imposed on the cryptocurrency. Do you think that it is the good way to legalize cryptocurrency in India? This has to be thought through in a very deep way, and they should have consultation before making any kind of move on this subject. The initial remarks, I could say that the fiscal terms regarding the financial year 22-23 is absolutely not clear. The budget speech of Honorable Finance Ministry is just like that of the presidential speech. Actually, this is an annual financial statement to be laid on the table of the House. Instead of making the speech on the financial terms and conditions, she is speaking about the innovative ideas and programs, but unfortunately it's a financial commitment. What is the financial commitment? What is the allocation? Nothing is mentioned in the budget speech. But they have given a relaxation to the corporate sector. How do you react to this? Again the corporate sector, again the benefit has been provided, extending 1 more year for getting the benefit of this 15% of corporate tax that has been extended to the corporate sector. But at the same time, there is no announcement as far as the poor farmers are concerned, especially the workforce, the labor force in the country. Unemployment is one of the major issues the country is facing. Unfortunately, nothing is mentioned about so as to resolve the issue of unemployment. Only they are speaking about some projects, infrastructure projects also. So my basic point is the concept of annual financial statement is being taken away by having a new methodology of making announcements, making declarations, and there is no fiscal impact, fiscal consolidation, nothing is mentioned in the budget speech, but there may be in the documents, but it is not for the parliament. The parliament has to hear. We are having the right to see what is the financial position of the country. Only she has spoken about the GDP and the fiscal deficit, how it will come, what would be the impact. All these consequences have to be stated in the budget speech. Unfortunately, nothing is made mention in the budget. My last question, sir. 30% tax has been imposed on a cryptocurrency. Do you think that this is the way it has been? So it is now legalized, cryptocurrency in India. How do you react to this? So that has to be examined, because not only the cryptocurrency, all sources of this digital income will be 30% tax will be imposed. I think that has to be elucidated, that has to be examined. Then only I can make an opinion on it. बजट पूरे देश के सर्वांगीण विकास का बजट है और बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और ऐसे बजट पेश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी और देश के वित्त मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। हर सेक्टर को इस बजट में तहकीकात किया गया है, हर सेक्टर को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है, चाहे वह दिव्यांग जन हमारे भाई बहन हों, कृषक हों, युवा हों, महिला हों, या फिर गाँव के गली गलियारे के लोग, चाहे वह बेघरों के लिए घर देने की बात हो, चाहे वह देश के सर्वांगीण विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, यातायात की सुविधा देने की बात हो, हर सेक्टर को इस बजट में छुआ गया है। सड़कों के निर्माण के लिए भी एक बड़े पैमाने पर इसमें पूरे देश को इसमें लिया गया है। इसलिए मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं। यह बजट देश के हर मानसिकता को, हर मन और भाव को छुएगा और हर सेक्टर को विकसित करने का काम करेगा। कोविड के कारण जो परेशानियां हुई, नौकरियां लोगों की गई, लोग कुछ इनकम टैक्स में आपने देखा भी अगर माने टैक्स पर भी, इनकम टैक्स पर भी रिलैक्सेशन हमें मिला है और हर उसमें भी जो उसके निमित्त उसके दायरे में आते हैं उनको भी रिलैक्स करने का काम इसमें किया गया है और इसका लाभ मुझे लगता है कि जब आप आगे देखेंगे तो इसका लाभ दिखेगा और इसका व्यापक लाभ है। सर, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मिडिल क्लास और टैक्स पेयर जो हैं Good afternoon. You're still within IANS TV and we're continuing our discussion on the budget.
Let's talk about political reactions. We've heard from Nirmala Sitharaman. Let's get some reactions from the opposition. Joining us is Moses. Moses, you've been talking to a bunch of people. क्या कह रहे हैं लोग? देखिए सबसे ज़्यादा उम्मीद ये थी कि बजट से कि टैक्स में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कल भी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा जेब में होना चाहिए स्पेंडिंग के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरह से ओवरलुक किया है। और क्योंकि टैक्स रिलीफ मिडिल क्लास को लेकर जाता है, इसलिए वो बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बन रहा है कि जिस तरह से विपक्ष ने पूरा घेरा है सरकार को, उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा, खासकर स्मॉल जो लैब सबसे छोटा जो स्लैब है उसमें कुछ टैक्स रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए इसमें आगे दिक्कत होगी। और 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, और 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, इसमें अगर सरकार ने कोई राहत दी होती तो शायद उसका फ़ायदा मिलता, लेकिन जिस हिसाब से टैक्स रिलीफ को ओवरलुक किया गया उससे एकदम साफ है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि उनके पास पैसे ज़्यादा आएँ। गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि पैसे जाएं, तो गवर्नमेंट अभी पैसे सिर्फ आ रहे हैं, तो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू ये बनेगा। और जब बजट्स के डिस्कशन होंगे रिसेस के बाद, तो उसके बाद ये पॉइंट अपोजिशन ज़रूर उठाएगा कि टैक्स में रिलीफ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मोजेस, इसमें कितना सच है कि गुड इकोनॉमिक्स डज नॉट मेक गुड पॉलिटिक्स? See, the circumstances are this, that the government has to drive its growth engine, which is more important to create employment generation, and the government has focused on the growth and overlooked this, but they have given money for very social free rations they have been distributing, that will continue in this fiscal. Then किसान सम्मान निधि वो एक बड़ा component है जो सरकार की तरफ से जा रहा है। तो डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट जेब में डालने की कोशिश कर रही है, ना कि इस तरह से रिलीफ देकर। तो टैक्स ज़्यादा टैक्स करो और पैसे दो, शायद इस फॉर्मूला पे मोदी जी काम कर रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसी को शायद इम्प्लीमेंट किया। तो जो पक्ष में है बजट के, वो तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट बजट, ग्रोथ बजट। जिन्हें नहीं पसंद आ रहा वो क्या कह रहे हैं? देखिए, तकरीबन 20 साल से बजट में यही होता है, जिसकी सरकार होती है वो कहता है बजट बहुत अच्छा है, और जिसकी सरकार नहीं होती वो कहता है बजट बेकार है। और पारुल क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट्स में एक्सपीरियंस है, इनको पता होगा कि हमेशा चाहे प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हों, चाहे यशवंत सिन्हा, चाहे उससे पहले जसवंत सिंह, कभी भी अपोजिशन खुश नहीं होता है। और जब मनमोहन सिंह ने 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए थे, तो सबसे ज़्यादा बीजेपी परेशान थी, जो अभी ग्रोथ इंजन और ड्राइव और ये सब की बात कर रही है। Where you stand depends on where you sit, हाँ। तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपोजिशन के जब गवर्नमेंट पर रहती है तो दूसरी तरह से सोचते हैं, जब अपोजिशन में आ जाएंगे तो दूसरी तरह से सोचेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, तो जो स्टेट्स को शेयर देता है सेंटर, उसमें भी तो इजाफा हुआ है। देख, कहा जा रहा है, लेकिन अभी आपको पता है कि इस फिस्कल में पारुल विल करेक्ट मी कि बहुत सारे जीएसटी ड्यूज हर स्टेट्स के बाकी हैं, और बहुत सारे स्टेट्स लोन ले रहे हैं बैंक से। इवन सेकंड जब वेव आया था लॉकडाउन में, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर, ने कहा था कि आप बोरो करो। अच्छा। तो उसमें अपोजिशन ये कह रहा था कि आप बोरो करके दो, लेकिन वो गवर्नमेंट कह रही थी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट बोरो करो और अपना खर्चे पूरे करो। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट तो अभी सैलरी देने की स्थिति में नहीं है, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं। तो जीएसटी का कंपोनेंट को लेकर अभी जो कॉर्पोरेट और फेडरल, this is an important point because it really depends on the relationship between the center and the states. Yes. And the relationship between the center and the opposition states is so fragile. It's so tense, and we see it all the time in parliament and outside, right? So unless there is a real effort to come together, it's going to be pretty difficult on moving together on some of these issues. And every time there's an election, they become more combative. Even if they want to work together, the politics constrains them from joining hands. States have limited resource also. Okay. They have only, I think, this VAT on petrol, which is a major component. उसकी वजह से, और सेल्स टैक्स खत्म ही हो गया जो उनका मेन इनकम था। तो जीएसटी का जब तक पैसा नहीं जाएगा स्टेट्स के बाद, तो स्टेट्स तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, खास करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसको 400 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अच्छा। पर क्विंटल एज ए इंसेंटिव, जो उनका प्रॉमिस था। फिर उन्होंने कई स्कीम्स शुरू किए, गोधन न्याय योजना और ऑल वो पूरा इकोनॉमिक्स जोड़े गाँव के साथ। तो उनके पास पैसे कमी है। राजस्थान में भी यही हाल है।
तो जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो उद्धव ठाकरे भी लगातार कहते रहे कि उनके पास जीएसटी के पैसे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसे होल्ड कर रखे हैं। तो मतलब इस फिस्कल में, अब नेक्स्ट फिस्कल में क्या करेंगे, अब ये देखना वाला चीज़ होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसको पैसे देती है, किसको नहीं देती। पर पॉलिटिकल रिएक्शंस में जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है कि जैसे टैक्स स्लैब में, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, क्या वहाँ पर उनकी दरकार थी? एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ खास चाहते थे? एमएसएमई सेक्टर के लिए तो कुछ पैसे गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं। अभी कंपोनेंट जिस तरह से इजाफा होगा तो एमएसपी क्योंकि बिग पुश देना गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि वही सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एमएसएमई सेक्टर सबसे बड़ा कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है नहीं। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए अपोजिशन भी डिमांड कर रही थी कि इनको आप इम्पेटस दो, कुछ ना कुछ दो सहूलियत। तो गवर्नमेंट ने कुछ दिया है, लेकिन अभी कितना दिया है ये अंदाजा थोड़ी देर में होगा कि कितना अगर पैसा। विपक्ष को बधाई देनी हो तो बधाई कौन सी बात है जिस पर आपको लगता है सब एक मत होंगे कि ये बात तो अच्छी आई बजट में? 90 मिनट में स्पीच खत्म करिए। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ भी कि 90 मिनट में स्पीच भी खत्म हो गई। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई हैं कि पब्लिक को डायरेक्ट पता चले कि पब्लिक क्या सोच रही है। जैसे हेल्थ का आउटले उन्होंने नहीं बताया कि कितना है। डिसइन्वेस्टमेंट पे भी कुछ नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट तो उन्होंने शायद 65,000 है करोड़ का किया है नेक्स्ट फिस्कल में। तो लेकिन विस्तार में कोई बात नहीं करी। हाँ, सरकार का रिकॉर्ड डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा नहीं है। अभी फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। सरकार का रिकॉर्ड में बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए भी क्योंकि ये लोग टारगेट देते हैं लेकिन अचीव कर पाते हैं। पर ये जो ओवरऑल फिगर्स आए हैं, हम सोच रहे थे 40 लाख करोड़ या करोड़ तक का एक्सपेंडिचर बजट हो सकता है, 39.4 लाख करोड़। तो ये अपेक्षा अनुसार है एक्सपेंडिचर अगले साल के लिए? वो तो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में। और वो पीएम का गति शक्ति प्रोजेक्ट है जो 7 ग्रोथ इंजन, उन्होंने कहा कि उसको मर्ज करके एक साथ वहाँ पे पैसे लगाएंगे। शायद रेलवे, पोर्ट्स, हाईवेज, इस सब पे पैसे लगाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बजट में जो कहा जाता है वो ग्राउंड पे कितने हकीकत उतरता है ये देखने को एग्जैक्टली। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। चलिए सुनते हैं बाकी पॉलिटिशियंस से व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिटिकल रिएक्शंस कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। थैंक यू वेरी मच। Well, I think it's a very, well-balanced budget, given the situation that the whole world and especially our country is facing because of the pandemic for the past 3 years. I think despite the ill effects of the pandemic, still the way the budget's been presented, it's a very, well-balanced and a strong budget. But opposition says that nothing has been done for the creating unemployment, creating job opportunity for the unemployed. Well, the opposition were anticipating that it's going to be a very election-oriented budget because there are elections happening in the 5 states of the country. So if there were a lot of relaxations if they were given, then they would have said that, it's for the vote bank politics for the election that this budget has been delivered. But having said that, I think it's an out-and-out well-balanced budget, taking care of the priorities of the country and taking care of the weaker section and the young entrepreneurs of the country. I think it's a very, well balanced budget. Once again, corporate sector has been given lots of relaxation to them, financial relaxation to them. How do you see? I think it's an important step for the Atmanirbhar Bharat, and whatever budget and the announcements that have been made in the budget, I think it's been made keeping Atmanirbhar Bharat in mind. This budget is a pro-rich budget and a pro-corporate budget. Right. This budget is against the farmers, against the poor people of India and the youth of India. Their joblessness, there is no answer for the joblessness. There is no job creating programs announced. The government still favors the corporates. Okay. And so many things have been, lots of concession have been given to corporate sector. Instead of the budget paper does not speak about the farmers, unemployment, etc. How do you see to it? This government works for the corporate. हम दो हमारा दो का सरकार है ये, और this government's only nature is that to work for those people who pay them to win their elections. Due to their complete focus is on the corporate welfare only. Due to the COVID pandemic kind of thing, lots of jobs have been gone away. So regarding the creating job, etc.,
there is no clear-cut roadmap for the government as opposition say. How do you react to this? The government doesn't care about job creation. They only believe that the big numbers, 2 lakh crores, 5 lakh crores, like that number is enough, they think. Therefore, their only worry is about the numbers, not about the jobs. My last question, 30% tax has been imposed on the cryptocurrency. Do you think that it is the good way to legalize cryptocurrency in India? This has to be thought through in a very deep way, and they should have consultation before making any kind of move on this subject. The initial remarks, I could say that the fiscal terms regarding the financial year 22-23 is absolutely not clear. The budget speech of Honorable Finance Ministry is just like that of the presidential speech. Actually, this is an annual financial statement to be laid on the table of the House. Instead of making the speech on the financial terms and conditions, she is speaking about the innovative ideas and programs, but unfortunately it's a financial commitment. What is the financial commitment? What is the allocation outlay? Nothing is mentioned in the budget speech. But they have given a relaxation to the corporate sector. How do you react to this? Again the corporate sector, again the benefit has been provided, extending one more year for getting the benefit of this 15% of corporate tax that has been extended to the corporate sector. But at the same time, there is no announcement as far as the poor farmers are concerned, especially the... Yes. Is my voice audible and clear? Yes. Okay, great. Thanks. We're starting, Sudhakar. Yeah, sure. You're watching IANS TV, and we're getting you the coverage of the union budget for the financial year 22-23. And right now, let's focus on personal taxation. I'm joined by Sudhakar Seturaman, partner with Deloitte India. Sudhakar, good afternoon. Hey, hi, good afternoon. Your first thoughts on the budget? Thanks for connecting. Right. See, I think there were a lot of expectations from the individual side on the budget, at least things like increasing the standard deduction, increasing the limits for ATC, or allowing the individuals to set off their house property loss in the old manner, like, whatever is a full loss, instead of restricting it to 200,000 rupees. Somehow the budget seems to be focusing more on the principal aspects, which is around, revenue generation for building the nation, and not on these elements. There was also a huge hue and cry from the market, especially from individuals who were working from home, and they were incurring expenditure towards that. So those things were not addressed by the government here, but still, aspects like clarifying once again that money is received towards COVID treatment or death of a relative on account of COVID as exempt from tax is a welcome measure. And the much awaited clarification on, the virtual assets supposed to be taxed at the rate of 30%, I would say is a welcome move from the government. That is going to add revenue. It provides certainty to the individuals who are dealing with this. And what I expect is when the government is tabling this finance bill, they would also be presenting the cryptocurrency bill for approval. Only then the Reserve Bank of India will be able to issue the rupee denominated cryptocurrencies in whichever form, base and means it is going to come in. So that taxing the cryptocurrencies is a welcome move at the rate of 30% is what I feel. The only thing is, maybe on one side, when the government is generating this 30% tax on cryptocurrencies, which would you add another 37% surcharge to it, they could have done something from the individual's point, because every budget the minister acknowledges the contribution from individuals and that too from salary taxpayers. Since I feel that there is a small lack in terms of filling that aspect. That is the only take from my end. Okay, so Sudhakar, let me understand each of these points with example. Let's begin with the corona impact.
Now, every household has got more medical expenses. So when you talk about, say, Section 80D of income tax, what's the permissible limit for an assessee to claim medical expenses right now? And what was our expectation from this budget? Right. I think the general expectation was, if you go back in time, 3 years back, the government withdrew the typical medical reimbursement of 15,000 rupees, Yes. which everybody would incur. And then they reintroduced the standard deduction of 40,000 rupees at that point of time. So typically the government took back 33,000 rupees along with conveyance and gave you a 40,000 rupees of deduction. Today, the amount of medical expenditure, even the protective gears which people have to take up to manage the corona thing, has gone up manifold. While the nation empathizes people who have suffered, who have gone through this, but there are also costs which are incurred by people who are not being subject to this. Even this, private hospitals, if you go and take a medical injection for a corona, for a vaccination, right? So the expectation is that there should have been, if somebody is going to reimburse this, generally employers give this as a reimbursement and they withhold taxes because there is no specific clarity on that. Except for this corona death related and COVID maintenance, medical expenditure. There was an expectation that the government will clarify it, which they have done as a part of this COVID related medical treatment and COVID related death expenditure. But general work from home expenditure is not addressed, which was expected from the individual side. Right. Yes. Well, we do express our gratitude to the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman, because when she started out her speech at 11 this morning, it was by empathizing with those who had suffered from COVID and also the economic effect because of corona. But you rightly said, because people have been working from their home, they're using their own laptop, extra expenses of Wi-Fi, office space, some allowance on that front would have been really good. Yeah, not only that, she acknowledged the mental trauma which people are going through on account of the last 2 years. Salaried class working from home are no exception to it. While some of the other schemes have been announced by the government, typically the expectation from the public at large would be that if some concession is given in this direction, it would be good. So that's the point here. One good news for the state employees was to bring them at parity with the employees of the central government as regards the new pension scheme. Correct. That's true. Again, while it is good that the government wants to make sure that the center and state are at equilibrium in terms of, because at the end of the day, they are both central and state government employees are working for the public. So it makes sense to, bring a parity, increasing the NPS contribution from 14%, from 10% to 14% for state government. There was a bit of curiosity to check the fine print to see if they would have extended this to the private sector. Yes. Unfortunately, it is there only for state government employees, their limits getting increased to 14. And for private sector employees, still the limit is at 10%, which continues. Do you see that as an anomaly that probably needs rectification, bring even private employers at par? I would definitely see it as an anomaly for a couple of reasons, because when you look into the policy measures of the government, right, yes, they are constantly insisting on private-public partnership. Yes. Right? And as a result, when you want to develop the nation jointly with private sector and with the government and in the larger interest of the country, there will not be these classifications, perhaps just 3 or 4%, while taxation can still be paid by the private sector employees, at least from a return point of view, they would have made some more gains if this limit is increased to 10 to 14. Yeah, I think that's a very good point, that given the increased stress on public-private participation, why not have parity in terms of such incentives for both? Let's talk about the most fascinating part, the digital currency. So like you said, we were expecting crypto bill could well be tabled in the winter session of the parliament in December. That didn't happen. Can we expect now that in the budget session, for sure, the crypto bill will be tabled? Yeah, we can expect it, because when you look into the fine print, they are proposing that the 30% tax to take effect from 1st June 22. So perhaps I thought this 2 months could be the time frame for preparing the system. They might have done most of it by now, but for getting the bill approved by the parliament and by the Rajya Sabha and then by the president, table it, prepare rules if it is required for administering for creating the mechanism for cryptocurrency. The taxation is just an add-on to this portion. In fact, if you look into the fine print, it very clearly says it is not
tax of 30% is not just for the Indian rupee denominated cryptocurrency, and government has wide powers to include anything other than an Indian rupee denominated cryptocurrency within its ambit. So in a way, if the government, I would say that the government has got breaks to manage it. If things are going to go haywire or not in the intended direction, perhaps they can apply the brakes and then restrict the number of cryptocurrencies who are going to participate here. That is one welcome measure, I would say. So did you say that it will be effective 1st of June when we can have India's own digital currency? See, I think the digital currency taxation will take effect from 1st of June, but the preparation mechanisms could happen even before it. So we have to wait and watch when RBI is going to roll over formally, announce it, make it to the public. We just have to wait for the dates. From a taxation point, it's going to be 1st June. So because even in the last fiscal, we've seen that in excess of 10 crores Indians have invested in different cryptocurrencies. Exactly. Effective 1st of April next financial year, will they be in the tax ambit, or everyone, whether they buy Indian virtual currency or others, it'll be all together on one date? That's a very good question. As of December, right, if you look into the number of tax returns that were filed in India, it were about something like 5.95 crores or close to 6 crore tax returns that were filed, which is lesser than the number of cryptocurrency users in India, as per the statistics. So, which means, we have to ask a bigger question: are there people who are using cryptocurrencies and not paying taxes? That will be a much bigger question. Hoping that those people are going to file the return within the extended due dates, which is February and January and things like that. All right. I would still feel that the ambiguity around the cryptocurrency taxation has been settled by this budget. People were wondering whether it should be taxable as business income, whether can I claim expenditure that I incur as a deduction, or I have incurred a loss. So, last couple of weeks back, we saw how cryptocurrencies were trading and they were going down south, right? So those ambiguities have been addressed and put to rest by the government. So I think we can expect more action to come here, because there are so many players within the cryptocurrency sector, not just the individuals who are trading it. There are also intermediaries. We have to see how the cryptocurrency bill and the consequential income tax is going to pay way to accommodate everybody and provide the amount of certainty and clarity for all the players in the system. But Sudhakar, 30% tax rate on the virtual digital asset and no set off allowed. That's a little harsh, no? Today, the market for cryptocurrencies, all these years has been increasing substantially, except that there was a dip over the last, few weeks or few months, right? I go back to the old days when, the tax rate is going to be 30%. Government would still tax the income from winning from lotteries and horse races at a much higher rate of 40%, right? Perhaps to start with, initially, they are looking at cryptocurrencies as a means to generate, contribute to the fiscal deficit. That's why they are looking at a gross basis of 30% tax. And it will also be interesting to note how they are going to monitor this, because there is the TDS element involved here at the rate of, 1% or something like that. So, I think we are in for an interesting, phase of regulatory movement. I have to see how this is going to be handled. Right. Sudhakar, one last question, quick reaction. Updated return. Does it benefit the SSE, the 2-year window? I would say that whomsoever has missed to report an income, or whomsoever had an ambiguity to furnish a particular head of income, those people will stand to gain. Because let's say, for example, I thought cryptocurrencies to be, let's say I didn't report any cryptocurrencies in the tax return because I felt that the tax return is not clear, right? In that situation, I can still look at, filing a tax return and then reporting my cryptocurrency income there, right? By this process, I can avoid, the prosecution mechanism within the Income Tax Act. I can pay the additional tax of 25% or 50% as the case may be. Right. But as a professional, what I feel is, people travel from India overseas. Cryptocurrencies is not the only means where Indians invest to earn income, right? People travel for employment reasons. People also have other investments income from the overseas countries. Right. If you know, India tax year is not aligned with many of the countries in the world. We follow April to March. Most of the countries follow Jan to December. Some follow July to June, right?
Today, under the current mechanism, the timeline for filing a revised return has been curtailed substantially by the tax authorities. So, if I have to claim a foreign tax credit, I need the overseas tax return. In many cases, it poses a challenge that I may not have that in time. It would have been great if they have also permitted the foreign tax credit somewhere in the mechanism. Well, I think it's a very, well-balanced budget, given the situation that the whole world and especially our country is facing because of the pandemic for the past 3 years. I think despite the ill effects of the pandemic, still the way the budget's been presented, it's a very, well-balanced and a strong budget. But opposition says that nothing has been done for the creating unemployment, creating job opportunity for the unemployed. Well, the opposition were anticipating that it's going to be a very election-oriented budget because there are elections happening in 5 states of the country. So if there were a lot of relaxations if they were given, then they would have said that, it's for the vote bank politics for the election that this budget has been delivered. But having said that, I think it's an out-and-out well-balanced budget, taking care of the priorities of the country and taking care of the weaker section and the young entrepreneurs of the country. I think it's a very, well balanced budget. Once again, corporate sector has been given lots of relaxation to them, financial relaxation to them. How do you see? I think it's an important step for the Atmanirbhar Bharat, and whatever budget and the announcements that have been made in the budget, I think it's been made keeping Atmanirbhar Bharat in mind. This budget is a pro-rich budget and a pro-corporate budget. Right. This budget is against the farmers, against the poor people of India and the youth of India. Their joblessness, there is no answer for the joblessness. There is no job creating programs announced. The government still favors the corporates. Okay. And so many things have been, lots of concession have been given to corporate sector. Instead of the budget paper does not speak about the farmers, unemployment, etc. How do you see to it? This government works for the corporate. हम दो हमारा दो का सरकार है ये, और this government's only nature is that to work for those people who pay them to win their elections. Due to their complete focus is on the corporate welfare. What is your initial reaction on the budget? My initial reaction, as per the words, was that it is going to be a very interesting budget. It would be a transformational budget. But when it was elaborated, we realized that there is nothing for Aam Aadmi. There is nothing to reduce the burden of their expenses. There's nothing to increase their incomes. And it is unfortunate that this is an opportunity that the government of India has missed. But the government is saying this is a futuristic budget. How is it futuristic when you do not give income to people in their hands? How is it futuristic when you're not addressing the biggest challenge that is facing the country right now is of unemployment? The biggest challenges have gone unaddressed, and you continue to talk about futuristic budgets, etc. when your data does not match up to reality. My last question. 30% tax has been imposed on the cryptocurrency, but the government has not brought any kind of regulation for that. I think regulation will be the natural outcome of what has been identified. They have identified that this is going to be an asset class. They have identified a tax structure to it. They have identified that this is a space that cannot be banned. But we would hope that the cryptocurrency bill, when it comes, it will create a regulatory framework which will ensure that India moves in the right direction in the tech space. माननीय मोदी सरकार का जो निर्मला सीतारामन ने जो बजट आज पेश किया 2022-23 का, ये बजट मतलब सभी वर्गों को न्याय देने वाला है, सभी देश के विकास के लिए काम करने वाला है। ये बजट तो है विकास की गंगा, ये बजट तो है विकास की गंगा, कांग्रेस वालों मत दे दो पंगा। मतलब ये बजट इतना अच्छा है कि भाई इसको तो सपोर्ट करने की आवश्यकता है, उसमें सुझाव देने की आवश्यकता है, और एक दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रावधान इसमें किया है। इसमें 400 ट्रेनिंग बढ़ाई है, MSME के लिए 2 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए अनाउंस कर दिया है, और 60 लाख स्टार्टअप में नौकरी देने का भी वादा किया है, 80 लाख मकान बनाने का भी वादा किया है। तो इसी तरह मतलब ये बजट बहुत अच्छा है, और ये बजट का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। I'll tell you very frankly, when you ask me what is my reaction,
I look for my reaction, I don't get any. Because this is one of the most tasteless budget I have seen. This is one of those budgets where I cannot see green signal anywhere. You know, the idea of budget was to give relief to common people. The fundamental idea. Did you get anything substantial in terms of relief to the common people or to the middle classes? Nothing, none whatsoever. My biggest concern and a scary concern is the unprecedented unemployment situation. The government has no plan whatsoever to tackle unemployment. Literally, I'm telling you, the youth of this country is in a volcano. But this country, any day, it shall erupt. It shall be difficult for the day. Any day, eruption. Some of those visuals we have seen in recent times, when the visuals we have in the day, when बजट पे आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया है? केंद्रीय मंत्री है, आपके मंत्रालय के हिसाब से क्या अचीवमेंट आपकी रही है? ये बजट में तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्यान दिया है, प्रोग्रेसिव बजट है, डेवलपमेंटल ओरिएंटेड बजट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बजट है। बजट कोई लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स ही नहीं किया, बहुत जगह टैक्स कम किया है और इसके कारण स्टेट का सेंट्रल का रिलेशन भी ठीक होगा। इस बजट से बहुत स्टेट्स का डिमांड्स था, अलग अलग उस विषय पर ध्यान दिया है। रिवर लिंकेजेस पर उसके साथ आज़ाद का अमृत महोत्सव का संदर्भ में हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम का प्रावधान दिया है। और नॉर्थ ईस्ट में लगभग 8,000 करोड़ इस साल बजट बढ़ा है। नॉर्थ ईस्ट में लास्ट ईयर 68,000 करोड़ था, अभी लगभग 76,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए इस बजट में प्रावधान दिया है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हर विषय पर आज नॉर्थ ईस्ट के विषय पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सरकार आगे भी अच्छे काम करने वाले हैं। इस बजट को लेके क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले भाई देखिए, ये अमृत महोत्सव के दौरान ये अमृत बजट है देश का और पूरी तरह से आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट पेश किया गया है। इसके लिए मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है, वो सचमुच में उनको हम बधाई देना चाहते हैं। जो उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित ये बजट पेश किया गया है। समाज के महिलाओं, युवाओं, किसानों, विशेष करके लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी प्रकार के उद्योगपतियों, सभी को समान रूप से, सम्यक रूप से उसमें निहित किया गया है, उनका ख्याल रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद जो आपने देखा कि देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में ये बहुत ही कारगर कदम होगा और देश के विकास को आगे बढ़ाएगा। हमने डिजिटल इंडिया की कमाल को प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हम डिजिटल इंडिया के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का भी निश्चय किया है। तो इस बजट में सब प्रकार का हरियाली बजट के रूप में हम कह सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो के सम्मेलन में जहां जलवायु परिवर्तन के विषय पर और पर्यावरण को हमने निश्चित रूप से एक चुनौती मानते हुए कार्बन के उत्सर्जन पर भी हम हर तरह से उस पर भी ध्यान रखा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आपके बजट की आलोचना कर रहा है कि इसमें जनता से जुड़े कोई मुद्दों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जनता के हित में नहीं है। भाई ये जनता का ही जुड़ा हुआ बजट है और जनता के लिए ही बजट है और जनता के हर चीज़ का ख्याल रखा गया। इसलिए विपक्ष का कहना, विपक्ष को कोई लाल चश्मा पहन के देखना चाहिए। So you just heard some of the political reactions to the union budget for financial year 22-23. It is the big day, the budget day, 1st of February 2022. Let's now listen in to Shri Nitin Gadkari, the Honourable Union Minister for Road Transport and Highways.
21st सेंचुरी में भारत कैसा होगा और 75 साल पूरे करने के बाद भारत किस दिशा से जाएगा, इसका एक प्रकार से दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इनको महत्व देते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और इंपोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो, और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, गांव, गरीब मजदूर किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियाँ बनाई गई है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला 2 प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला और अब पर्वतमाला, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोप वे, केबल कार, पेनिकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन हैं। इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा, जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इम्पॉर्टेंट पिलर हैं। इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज़ होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। संसद की पटल पे रखा है। आइए इस सेशन में बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की नज़र से इस बजट में क्या खास रहा, और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश गांधी, पार्टनर डेलॉयट इंडिया से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कॉर्पोरेट टैक्स से शुरू करूंगा, क्या खास रहा आज यूनियन बजट में? जी, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एक ये अच्छी बात है कि बजट में कोई खास चेंजेस नहीं किए गए हैं इनकम टैक्स लॉ में। जो हमने देखा है कि पिछले बहुत सारे सालों में हर साल बजट में इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं, जो टैक्स पेयर और इन्वेस्टर्स के लिए उनको फिर से सोचना पड़ता है कि अभी इसको हम हमारे ट्रांजैक्शन कैसे करें या उनके बिजनेस या व्यापार पे उसका असर होता है। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे चेंजेस इस बार बजट में किए गए नहीं है, जो एक अच्छी बात है। और पहले तो मैं जो इसके पॉजिटिव है इसकी बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में 15% से 19%
की बढ़ोतरी हुई है टैक्स कलेक्शन में, जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारा रूम मिला है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और आपने देखा कि खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें गवर्नमेंट ने इस बार सरकार ने बहुत जोर दिया है। तो वो टैक्स कलेक्शन जो काफ़ी अच्छे रहे हैं, उसका एक नतीजा है। इसमें कुछ पॉजिटिव बातें ये हैं कि जैसे स्टार्टअप्स है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्हें जो टैक्स इंसेंटिव दिया गया है उसे 1-1 साल से बढ़ाया गया है। ये एक तरह से अच्छा भी है और नहीं भी, क्योंकि इन कंपनियों को थोड़ा लंबे समय चाहिए होता है प्लानिंग करने के लिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उन्हें लंबे समय चाहिए होता है प्लानिंग के लिए, जो अगर आप 1 साल से उसको बढ़ा रहे हैं तो उन्हें इतना समय नहीं मिलेगा कि वो अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग न्यू यूनिट डालने के लिए कर सकें। बट ये एक अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो लाभ परियोजना है, जैसे PLI स्कीम्स हैं, सरकार ने भी हाल ही में अनाउंस किए हैं, तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। और ये जो 15% रेट है जिसको एक्सटेंड किया है 2024 तक, ये उनके लिए अच्छा है। दूसरी इसमें अच्छी बात ये है कि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गेन्स का जो सरचार्ज है लॉन्ग टर्म गेन्स का, वो 15% है। जो आप अगर लिस्टेड इन्वेस्टमेंट करते हैं BSE NSE पे या म्यूचुअल फंड्स पे, उस पे 15% है। बाकी बहुत सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स पे 37% सरचार्ज है। तो वो घटाकर 15% कर दिया है सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए। ये खास करके जो इन्वेस्टर या निवेशक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड्स में या मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट ये करते हैं, उसके लिए ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उनका जो टैक्स की दर है वो कम हो जाएगी इससे। यानी आप ये कह रहे हैं कि लिस्टेड के लिए तो पहले ही कम था, अनलिस्टेड के लिए LTCG का सरचार्ज 37 से घटाकर 15% कर दिया गया। जी 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 जी। और जो आपने बताया राजेश जी कि टैक्स कलेक्शन में, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15 से 19% की बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या कारण मानते हैं? क्या टैक्स पेयर का नेट बढ़ा है? मेरे ख्याल से इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जो हमारी गवर्नमेंट की जो कितनी सारी योजनाएं हैं टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और जो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, उनमें उन्हें सफलता मिली है। और दूसरा ये है कि आप जैसे एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में देखें, जो फॉर्मल जैसे व्हाइट कॉलर बोलते हैं, उसमें हर साल कोविड और उसके पहले उनकी जो तनख्वाह है या सैलरीज है, उसमें बढ़ोतरी होती है 10 से 15%। तो वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसमें। और सर्विसेज सेक्टर में जो क्षेत्र है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने SEZ का बेनिफिट हटा दिया है, तो उससे टैक्स कलेक्शंस की बढ़ोतरी हुई है। और फाइनली जो हमारे स्टॉक मार्केट का जो आपने देखा है लास्ट 2-3 वर्षों से जो बूस्ट मिला है, उसके कारण भी गवर्नमेंट को या सरकार को कैपिटल गेन्स में काफी बढ़ोतरी मिली है। कैपिटल पर गेन्स उस जो स्टॉक मार्केट में बूस्ट मिला है, उसके चलते आज एक अपेक्षा ये थी बजट से कि शायद STT हटा लिया जाए, क्योंकि अब तो LTCG भी है। तो वो एक निराशा है थोड़ी कि STT भी है, LTCG भी है। जी जी जरूर जरूर, वो एक जरूर निराशा है, क्योंकि जब STT को इंट्रोड्यूस किया था तो उसका उस समय यही उसका उद्देश्य था कि कैपिटल गेन्स का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो STT को इंट्रोड्यूस किया था, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इंट्रोड्यूस किया बाद में, पर STT को हटाया नहीं था। ये एक मांग थी निवेशकों की, और इस पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। और राजेश जी, जिस तरह हमने देखा 2020 में एक नया इनकम टैक्स स्लैब रिजीम भी आया था, लेकिन वो कितना लोकप्रिय हो पाया है? आप कैसे देखते हैं कि जनता को एग्जेम्पशन डिडक्शन चाहिए, तो वो जो पहले एक ओल्ड रिजीम थी वो उसी को लाइक करती है, या नई टैक्स रिजीम को भी लोकप्रियता मिल रही है? मेरी लास्ट का जो आप बोल रहे थे वो सुनाई नहीं दिया, आप फिर से बोल सकते हैं? Yeah, my question was that in 2020 we had the new income tax slab regime come as well, without the exemptions and deductions. Is it becoming increasingly popular? The new income tax regime, sorry, मैं Yes. लास्ट को जिस सुनाई दिया आपका। Yes, the new income tax regime. मेरे ख्याल से उसमें काफी
सैलरी टैक्स पेयर्स ने ऑप्ट किया है न्यू इनकम टैक्स रेजिम को। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अगर आप जो उसका बेनिफिट आप देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है पुराने और नए रेजिम में। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत उसमें बेनिफिट है नए रेजिम में। तो बहुत सारे सैलरी टैक्स पेयर्स ने न्यू रेजिम को ऑप्ट किया है, पर इस बेनिफिट को ज्यादा कर सकते थे, बट जो नहीं किया गया। आपको उम्मीद थी कि जो नया टैक्स रेजिम था उसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन या HRA कुछ इंक्लूड कर देते तो बेहतर रहता? नहीं बिल्कुल, क्योंकि खास करके जब टैक्स का कलेक्शन इस साल अच्छा था और कोविड में बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो दूसरे सेक्टर हैं जिन्हें बहुत सारे जैसे टूरिज्म सेक्टर वगैरह में लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, तो ये उम्मीद थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाएगा और हाउस HRA वगैरह के लिए जो रिलीफ दिया जाएगा वो शायद सरकार ने नहीं दिया, वो थोड़ी नाउम्मीद है उसमें। तो मान लीजिए कोई नौकरी पेशा ये कार्यक्रम देख रहा है, उसकी महीने की आय 50,000 रुपए है, साल के 6 लाख कमाता है, जो वो अभी टैक्स दे रहा है इस वित्त वर्ष, अगले वित्त वर्ष भी मोटा तौर पे वो उतना ही देगा, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है उसके लिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल उस पर फेरबदल नहीं है। और ये उम्मीद थी कि अगर आप उसको या तो आप उसका बेसिक जो स्लैब है उसको बढ़ाते हैं या आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाते हैं, तो एक तरह से आपको कहीं ना कहीं कंजम्पशन में भी उसका फायदा मिल सकता था, जो कि जैसे महंगाई बढ़ गई है स्टील प्राइस सीमेंट प्राइस की वजह से, तो वो एक बेनिफिट मिल सकता था, पर शायद उसमें गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो इंडिविजुअल के लिए तो पर्सनल टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं, ज्यों का त्यों है। इस समय कॉर्पोरेट टैक्स कितना है रेट? कॉर्पोरेट टैक्स आपका एक तो जो कंपनियां है वो 25% रेट और सरचार्ज मिला के 28% रेट को ऑप्ट कर सकती हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए 15% रेट है। और ये अवधि बढ़ाई गई है फिर, ये जो लोअर 15% रेट था? नहीं, इनफैक्ट ये जो 15% रेट है इसका जो फायदा है वो 1 साल और बढ़ाया गया है। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उन्हें 2023 तक अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना था, इसको बढ़ाकर 2024 किया गया। ये एक वेलकम स्टेप है। एक वेलकम स्टेप है, पर मेरे हिसाब से इसे शायद 2025 या 26 करना चाहिए था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको काफी सारा प्लानिंग लगता है, आपकी लैंड है, फैक्ट्री है, तो इसमें थोड़ा लंबा समय चाहिए होता है प्लानिंग के लिए। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स की लिमिट भी वो बता रहे रिड्यूस करके रेट 15% हो गया है। जी, उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को फायदा दिया गया है, जो उनके सरचार्ज है उसे रिड्यूस किया गया है इनकम के ऊपर, जो घटाकर 15% किया है गवर्नमेंट ने। तो ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स के अलावा आप कैसे आकलन करेंगे? आज जो बजट आया है, आपके हिसाब से टॉप 3 पॉइंट्स क्या रहेंगे आज के इस बजट के? जी मेरे ख्याल से टॉप मेरे 2-3 पॉइंट तो ये है कि एक तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है इनकम टैक्स रूल्स में, और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स वगैरह इनको बूस्ट करने के लिए थोड़ा बेनिफिट दिया गया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो गिफ्ट सिटी है और जिसमें गवर्नमेंट का खासी ध्यान रहा है उसको बूस्ट करने के लिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ फायदे दिए हैं, जैसे कि अगर कोई बैंक है जो गिफ्ट सिटी में अपना सेटअप करते हैं और वहां से वो पी नोट्स वगैरह इश्यू करते हैं, तो उन्हें टैक्स में पूरी छूट दी गई है, जो कि अगर आप आज देखें तो मॉरिशस, सिंगापुर में ये सारे पी नोट्स वगैरह वहां से इश्यू होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने सरकार ने गिफ्ट सिटी में इसे प्रोत्साहन देने के लिए किया है। तो ये बैंक्स इंडियन बैंक्स है या ये फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं? ये इंडियन या फॉरेन बैंक्स दोनों हो सकती है, जो गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच शुरू करती है और वहां से ये पी नोट इश्यू करती है, इन्हें ये टैक्स बेनिफिट दिया गया है। जी, आपको लगता है कि गिफ्ट सिटी IFSC सेंटर जो कि अहमदाबाद गांधीनगर में अब ऑपरेशनल है, ये एक बड़ा फिनटेक बनकर निकलेगा और इससे जुड़े टैक्सेशन पॉलिसीज में भी क्लैरिटी है अब? जी मुझे लगता है, क्योंकि रेगुलेटरी और टैक्स के हिसाब से सरकार ने इसमें बहुत सारी सुविधाएं, जितनी मतलब मैं 100% तो नहीं कहूंगा, पर जितनी सुविधाएं वो दे सकते थे सरकार ने दी है। और इस बजट में जैसे उन्होंने कहा है कि आर्बिट्रेशन को प्रमोट करेंगे, जो सिंगापुर में बहुत सारे आर्बिट्रेशन होते हैं उसे गिफ्ट में प्रमोट करेंगे, या उन्होंने जो शिपिंग के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो बेनिफिट दिए, इससे फिनटेक, फंड मैनेजमेंट जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग और बैक ऑफिस कंपनियां हैं, इसे सरकार ने अपनी तरफ से पूरा बूस्ट दिया है। और अब ये देखना है कि कितनी कंपनियां
जैसे बड़े जगह बॉम्बे है, दिल्ली है या हांगकांग, सिंगापुर है, वहां से निकल के ये गिफ्ट में जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर दी। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अहम फैक्टर है कि आप फिजिकली जाके वहां पे लोकेट करें। जी, आखिरी सवाल राजेश जी, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे समझें? 1% टीडीएस की बात भी है। ये एक बहुत ही आपने अच्छी बात बोली, ये बहुत जरूरी अमेंडमेंट है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल जो निवेशक हैं, इंक्लूडिंग जो मध्यम वर्गीय या मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने काफी पैसे डाले हैं क्रिप्टो करेंसी में, और उम्मीद तो यही थी कि गवर्नमेंट इस पर क्लैरिफाई करेगी। तो गवर्नमेंट ने कोई इसमें खास कंसेशन नहीं दिया है। जो मैक्सिमम एक तरह से कह सकते हैं कि टैक्स जो हो सकता है इसमें 30% टैक्स, और आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर टीडीएस भी होगा, और आप इसको अगर गिफ्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स होगा। तो जो मैक्सिमम हो सकता है एक तरह से गवर्नमेंट ने इसको टैक्स किया है। और एक नया जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन, जो बहुत सारे बड़े फिल्म पर्सनालिटीज या आर्ट की जो कंपनी है वो उन्होंने अपने इशू किए हैं, तो उस पर भी ये टैक्स लगाया गया है। पर अगर मैं पॉजिटिव साइड से इस पे देखूं तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में ना केवल क्रिप्टो एसेट्स बल्कि एनएफटी भी शामिल होगा। जी 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 जी, तो चलते चलते आप क्या विशेषण यूज करेंगे? ये ग्रोथ बजट है, अच्छा बजट है, कैसा बजट है? मैं कहूँगा कि ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली ग्रोथ बजट है, क्योंकि बहुत सारा जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। ये मेरे हिसाब से ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। हालांकि जो टैक्स पेयर्स हैं, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स होगा, उन्हें थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश की करोड़ों उम्मीदों का बजट पेश कर दिया। संसद भवन में सुबह 11 बजे उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल बजट पढ़ते हुए अपने भाषण का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये बजट केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। आइए आपको बताते हैं इस बजट की खास बातें। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशील परियोजनाओं को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 60 लाख नई नौकरियां, गरीबों को 80 लाख घर। भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान। टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है ये 2022 से। सेंचुरी में भारत कैसा होगा और 75 साल पूरे करने के बाद भारत किस दिशा से जाएगा, इसका एक प्रकार से दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इनको महत्व देते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और इंपोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो, और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, गांव गरीब मजदूर किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला 2 प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला, और अब पर्वतमाला, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोप वे, केबल कार, पेनिकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन है। इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा।
और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा, जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इम्पॉर्टेंट पिलर हैं। इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो परेली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज़ होगा पैलेट का। Welcome back to IANS News. We've been dissecting the budget. Amit is still with us. Amit, thali budget, a bit of everything. Yes. Not too spicy, not too bland. I think every year when the budget comes, the adjectives almost are the same. So either you'll say it's a populist budget or a growth budget or an investment budget, but looks like it may not be populist because there's hardly been any tinkering, say, with the income tax slabs or something like that for the middle class. But from nation building perspective, one hopes the investment comes both from the public and the private sector, and therefore it's a growth budget. Actually, it's really interesting. Populist nahi hai. That in itself is a statement. Yes. It's a bold statement कि भाई चुनाव सर पे हैं. They have resisted the temptation to be populist, and experts were saying कि ये है risk populism का. Absolutely. So what does that? What does that tell us about the spirit of the Prime Minister? I think nation first, because many would have thought that this particular month, being the election month, right? You've got 5 states which are going to the assembly polls. There will be some, freebies or something like that, some popular incentives. And had that happened, then you have reactions coming, see, you have an eye on election. Yeah. Don't do it, then also, that's, so I think it's nation first, and that's how it should be. So that's a welcome step. So let me ask you this. If you were an MLA from BJP trying to get re-elected right now. Well, I think I would rather be a happy Indian citizen, even if one is an MLA or MP. But if somebody is an MLA or MP or a public representative, then your accountability becomes even more. Yeah. And I think the point that you've been trying to make all through the day is that budget always looks good on paper. So we need the fine print, but I think real test will be another 2 months, 3 months next year when we actually see how much progress has been made. And that will be the true test of budget being a growth budget. At this point, what we can say for sure is that we've got a good platform. We've got momentum in growth. We have played catch up. We have caught up with the pre-pandemic levels in terms of growth. We do have some sort of a base now to take off from. And therefore, everybody's just happy that you haven't tinkered around too much. You haven't changed policy rashly. You haven't confused people. You haven't, added to compliance burdens. The word you hear more now, VDA, virtual digital asset. That's the key word. That includes NFTs. A lot of celebrities have done that. Amitabh Bachchan, Yuvraj Singh, many in the West, to preserve the heritage. What is so exciting about VDS? Well, it's your eyes light up. Yeah. I'm saying that these are new words that we've been hearing. Yeah. But now the fact that in today's budget you have the mention of virtual digital asset, you have the mention of digital currency regulated by the RBI and the taxes on it. This just kind of gives a legal canvas to everything that we've been hearing over the last a couple of years. And what is interesting and it's nice is that the first instinct of the policymaker or the RBI in this case was no. Yes. No, yes. Right? Yes. And then the court says, hold it, you can't say no. Yes. And then you start to see movement from outside, yes. from external influences. Yes. And then the policymaking apparatus shift gears, and now we do have it as a reality on paper. Absolutely. And I think even at the cost of being repetitive, I'm very happy about the National Tele Mental Health Program. And we've got a little bit more on that. There'll be actually 23 centers. And NIMHANS, operating out of the Garden City, Bangalore, will be the nodal center. And technically, they'll be held by the IIT based out of Bangalore. This is so important. I cannot emphasize this enough. Yes. There is so much distress in this country, and there is so much uncertainty, and there is fear, and people have suffered losses, business losses, family losses. Yes. It's really a laudable initiative. Absolutely. I think therefore it's essential that we all focus on our health, and then we also focus on wealth generation. Generating wealth is no sin.
Oh my God, wealth is very, very important. Yes. अपना बोल खाली रहेगा तो औरों के लिए कैसे करेंगे? Yes, absolutely. And therefore, I think even as people are showing greater interest, the citizens, to understand India's budget, from where does India earn, where does India spend? It's a democracy. It should not just be limited to voting and then 5 years not doing anything. I think associating with the India budget is very good. But I also would say, even as we are in the concluding session, that every household should also make their own budget. It's a beautiful financial tool to plan and then control. Again, very valid point. I don't think that we are in the habit of making budgets. Yeah, we don't do that. I don't think it's part of our conditioning at all in families. It can change. It's a happy new year 2022. In fact, it must change. Yes. Control over our personal finances is the starting point of wealth generation. Absolutely. पता ही नहीं कि हो क्या रहा है. Absolutely. So if you've not made your new year resolution so far, yeah. Make one this time, that I'll become more financially literate and I'll make people aware. If you've forgotten the new year resolution, no worries. If you've got your birthday in February, then also you can do that. Well, fantastic. Yeah. Good to have you. Fantastic to have you with us. Amit, last words? Well, I'll just say thank you very much and thank you to all the viewers for their support. I hope you had a nice start to the month. It's 1st of February. मंगलवार है, उम्मीद है कि मंगल रहा सबके लिए. बिल्कुल बिल्कुल. मेंटल हेल्थ सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब कुछ. Thank you again. Thank Goodbye. you.